Hello. Welcome back to Almighty Blues FC. Always a fan channel for all to see. और हाँ, lot of transfers यार. हम last couple of days से आए नहीं है, तो there's lots to discuss. क्या हुआ इन 2 दिनों में भाई, बहुत सारा बवाल मचा है. लेकिन there is a lot of other transfer news which is also obviously pending to be discussed. तो हम वो discuss करेंगे. लेकिन by default we have to see what has exactly happened and what will happen. तो हम कंपेयर करेंगे आज थोड़ा बहुत कि यार किसका ट्रांसफर विंडो बेटर रहा है, कौन सा पर्टिकुलर ट्रांसफर विल रियली एलिवेट अ क्लब टू द नेक्स्ट लेवल अगर वो हो जाता है, और विच हैज ऑलरेडी हैपेंड. तो वी विल जस्ट बी कंपेयरिंग बिटवीन क्लब्स. सो ऑब्वियसली दैट मींस दैट इंक्लूड्स एवरी क्लब, एंड आई नीड योर ओपिनियन मोर देन एनीवन बिकॉज इट्स एन ऑलमाइटी फैन चैनल. और सब लोग आ गए भाई. सूर्यांशु, यस, मैंने आपका पढ़ा है कमेंट यहाँ पर. डेफिनेटली दिस इज समथिंग टू बी डिस्कस फॉर श्योर, एंड आई कैन नॉट डिसएग्री विद दैट. एब्सोल्युटली ब्रो. अब मैं स्टार करके रख रहा हूँ. Zerato in the house. What's up? Yes, Real Madrid as well as Barca we have to discuss, and of course the Reds. Big news coming for the Liverpool fans. Of course, जो 2 दिन में थोड़ा बहुत डगमगा रहा था news, और we'll be talking about Henderson. Apart from that, what is something new that we can expect? Anil in the house as well. Devesh always supporting the channel. Big up यार. Of course, Manchester United कहीं ना कहीं होने वाला है. And yes, Lampard का interview discussion for sure. We'll touch upon that. Detail पे तो नहीं करेंगे. Definitely we'll touch upon that as always. अंदर रियल मैड्रिड फैन द हाउस. नहीं, मैं रहता हूँ भाई, इंडिया में रहता हूँ. आप कैसे हो, आप कहाँ रहते हो, डजंट मैटर. इट्स ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. और भाई, prove it that it's always a fan channel for all to see, not just by coming in, which is great, but also liking the stream. Why can we have everyone like that stream? सब लोग, everyone like the stream as well as like the community post जो मैंने post किया just a couple of minutes back, because that is what YouTube याद दिलाता है कि भाई हम घंटा गैंग ही नहीं है, और भी है Almighty fam. Yes, हमारा तो बनाना पता है नहीं, हो जाएगा. Today was supposed to be the Onana day. We'll be talking about that, and this will be huge. Yes, Jeevan for sure. Suraj in the house. Messi is good, of course, and real name hidden. Interesting name that as well. तो भाई सब लोग शुरू कहाँ से करें? भाई again, congratulations to Barcelona fans. I have to say, last 48 hours में it has been confirmed, और हमें पता ही था कहीं ना कहीं, और इसलिए मैंने डाला thumbnail में, because I think this is going to be a potential generational player that we're talking about. Vitor Roque भाई, पूरा समर में हमने डिस्कस किया है काफी उसके बारे में. what he brings कहीं ना कहीं kind of seems very similar to between Romario, Ronaldo and Adriano. That is very big names जो हम बात कर रहे हैं in terms of the potential that he has. लेकिन हमने सेम चीज बोला था लास्ट समर में. In fact, when we were chasing Endrick, even he was definitely there. लेकिन I think कहीं ना कहीं in the last 6 months, Vitor Roque has definitely gone up the ranks in my personal opinion. Of course, वो join करेगा only in 2024. Again, Laporta ने बोला है, not just Lampard interview, Laporta ने भी interview दिया है, काफी सारी चीजें बोले हैं. और I think the fact is about Arda Guler going to Real Madrid. He said that we didn't want to become one of those clubs who gets into the transfer wars. Fair enough. लेकिन जब आर्डा गुलर का 20 मिलियन यूरोज है आपका बेस प्राइस, प्लस आपके कमीशन फीस एक्सेट्रा, आई थिंक राइजेस अप टू डबल द प्राइस दैट. लेकिन विटर ओके इज 30 मिलियन यूरोज, वो भी हो सकता है उसका डबल. लेकिन द डिफरेंस बीइंग दैट यहाँ पर विटर ओके का यू आर एक्सपेक्टिंग this guy to actually get to the top 3 Ballon d'Or levels, and वो एक clause है. तो it'll be interesting. I know different players. Arda Guler is more like a cam, a second striker slash a right forward, more like an Asensio, or you can say an Ozil. लेकिन let's see how does Vitor Roque come on in Barca, क्योंकि अगर 2024 जनवरी में ज्वाइन करता भी है विटर ओके, इनिशियली तो लेवेंडोव्स्की विल प्ले दैट स्ट्राइकर रोल. तो will he be someone who will come off the left hand side? Will he playing behind? वो interesting रहेगा, because we also have a Pedri, remember that. And Pedri, I really rate him. For people out there who follow the channel know it absolutely. लेकिन हाँ, हम again will come club by club everyone. तो let's hit that like button. मैं अभी भी देख रहा हूँ काफी likes कम हो रहे. Bye, come on, let's not repeat the same thing by again and again. My brothers, everyone in the chat, and the sisters as well, even you're welcome. Everyone, let's hit that like button. Absolutely. Yes, Manchester United की बात कर रही है सूरज for sure. Omar in the house as well, and real name hidden. Nice to know that. Milan Sanjeev, yes, we have to discuss that for sure. और कपिल by default, भाई वो एक सागा है, not just the Mbappe saga. It is also भाई Colville saga भी होने वाला है, looks like it. Yes, we have to discuss Ethan in the house. Yes, Putin, Chelsea news तो obviously हम discuss करेंगे for sure. तो we'll be coming club by club. थोड़ा मैंने शुरू किया बारसा के साथ, and we'll be rating the transfers, we'll be comparing the transfers
कौन सा सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल ट्रांसफर रहा है और रहेगा इस विंडो में, प्लस क्लब वाइज विच विल बी मोस्ट इंपैक्टफुल, तो विल बी डिस्कसिंग। तो भाई बारसा का अगर आप ट्रांसफर विंडो देखो तो यू हैड गुंडोगन कमिंग, ठीक है। ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ द न्यूज लपोर्टा ने बोला है दैट देयर विल बी अनदर मिडफील्डर एटलीस्ट विल बी साइंड। दो मिडफील्डर्स बोला है, बारसा फैंस आप लोग बोलिए। गुंडोगन आ गया है एंड आई नो दैट यू लॉस्ट बुस्केट्स, बट विल यू एक्सपेक्ट टू मोर मिडफील्डर्स टू कम इन कंसिडरिंग निको आने वाला है बैक टू द टीम? और फॉरवर्ड लाइन तो ऐसे भी यू हैव एन आंसू फाटी एंड टोरेस हु सपोजिटली आर स्टेइंग, लुक्स लाइक इट, मेरे ख्याल से जाने नहीं वाले। तो what are you saying again? Neutrals आप लोग बोलिए, does Barca require two more midfielders or just one more midfielder will do along with a right back? Again, right back, the most affordable deal जो लग रहा है हो सकता है Fresneda might be actually happening, लेकिन Oriol Romeo, yes, Oriol Romeo is almost there if I'm not wrong. I don't think it's official yet. Confirm me, I don't think it's official yet. लेकिन Romeo और Gundogan looks like these are the two midfielders and a right back along with the 2024 जनवरी का विटर रोके कमिंग इन। मतलब हाउ डू यू रेट दैट ट्रांसफर? आप रेटिंग कैसे दोगे भाई? चैनल में सब जो भी लोग हैं, नए पुराने लोग, भाई अपने बंदे बता दीजिए, ओजी सब्स एवरीवन। The rating is almighty, mighty, so weak or very weak. That has been the rating of transfer in terms of our channel. तो भाई बारसा का क्या रेटिंग दोगे आप? Almighty, mighty, again assuming that they get a top right back. Again, Ivan Fresneda, I would not say is the top right back, लेकिन आप बोलो उसके एज ग्रुप में, in his age group basically, I think if not wrong, he's 19 if I'm not wrong. अगर वो आ जाता है वैलिडोलिड से ऑन अ चीप, भाई दैट्स अ ग्रेट फाइनेंशियल वैल्यू फॉर मनी वाला ट्रांसफर, एंड दैट्स समथिंग दैट आई एम सेइंग, क्योंकि ही इज बीन सॉट आफ्टर बाय अदर क्लब्स लाइक एसी मिलान एंड आर्सेनल भी, रिमेंबर दैट। तो ओके, ग्राउंड रियलिटी इज या रजिस्टर करना विदाउट फ्रीइंग अ वेजेस इज नॉट पॉसिबल। तो अगेन, तो you will free up a little bit of wages in terms of Longley for sure, maybe Kessie अभी भी यार सऊदी जा सकता है। आई नो बारसा सोर्सेस सब बोल रहे हैं भाई चेल्सी आने वाला है, मुझे नहीं लगता आने वाला है, बट लेट्स सी, अगेन आई माइट बी रॉन्ग। अगर हमें मिले नहीं our top midfield targets, we'll come to that for sure, then we might have to go with Kessie, whom obviously is a good player, but again, is he your ideal starter in a number 6 role in a club which is fighting for the title, or at least wanting to fight for the title? Yes, मैं बोलना चाहूंगा that is what the ideal aim should be, although realistically top 4 है। I'm not too sure about it. Inigo Martinez, yes, मैं भूल गया। Thanks man, Dave, thanks man, again chat OP यार, big up to the chat। Sadiq bhai in the house, what's up? We will need two more midfielders cause Kessie most likely, yes, exactly, जिसमें बोला Kessie अगर sold हो गया तो maybe there is a case। Pablo Torre on loan, okay, this I did not know that Barca fans are thinking, but Pablo Torre, I thought it's probably time for him to give some minutes, नहीं? तो you would have, I would say that you will have Nico, you will have obviously यहाँ पर Gundogan, you will have Romeo, and of course you'll have a Frankie De Jong in a proper midfield. Apart from that, Gavi could play there. Maybe you can have an Eric Garcia plays an emergency central midfielder, I'm saying. वो लग रहा है these are like 5-6 options in midfield with Pablo Torre going on loan, but वो 5-6 ऑप्शन है, दो इमरजेंसी वाले हैं, तो मे बी यू वुड वांट अ फिफ्थ चॉइस मिडफील्डर, व्हाट आई एम गेसिंग। सादिक भाई, दैट्स व्हाई वांटिंग अनदर मिडफील्डर। कौन है वो सादिक भाई? कौन मिडफील्डर? डू लेट मी नो व्हिच इज दैट मिडफील्डर दैट यू वुड लाइक टू हैव। ओके, ऑफ कोर्स बहुत सारे लिंक्स हुए, बट गोइंग बाय रोमेयो, आई डोंट थिंक in terms of finances it'll be possible, let me know on that। लेकिन हाँ, almighty transfer will be Inigo Martin as well, that's interesting again, but is he a starter? Sadiq bhai, great third choice center back for sure, because you have Christensen and Araujo, I think they'll probably start। नहीं, वरुण तो बोल रहे हैं mighty building for the future with Roque and Fresneda। Future में definitely is looking good. By talking about future, I think I really genuinely believe that Chelsea is right up there almighty, and we'll come to that why. Till now, I would say, given our financial conditions, Barca is mighty rating till now, fair enough। CDM is a must, Sunny bol rahe, Nico is not ready start every week yet, maybe one more attacking mid if possible, we need depth if we are to compete in UCL। Okay, attacking mid आप बोल रहे हो, तो basically you're saying someone in the position of a Pedri is what you're saying। Again, मतलब remember, I know Vitor Roque is not that, लेकिन मेरे ख्याल से जनवरी में जब आएगा तो maybe he'll start that। I'm just saying he could be that answer as well in the future। Who knows that if he could play that again। मैं claim नहीं करूंगा, हर एक गेम देखा है मैंने उसका, लेकिन obviously comes across as more like a striker than that। It could be a plan B, just saying, to begin with, और फिर देखते हैं, तो it could be one of the options। लेकिन remember, Gavi could also play that role, it's just not a proper number 8 that he could play। Predator Gaming in the house, what's up? Ghanta gang is your absolutely bhai।
यूनाइटेड रोड भाई, कल शायद हम लोग लाइव रहेंगे यूनाइटेड रोड भी, चेकआउट यूनाइटेड रोड पीपल कल रात को। भाई मैंने आपका मैसेज देखा, सॉरी आई फॉरगॉट टू रिप्लाई ब्रो, अंशुमन मैं करता हूँ, मैं कंफर्म करता हूँ। व्हाई बारसा प्रेसिडेंट इज सो जेलस ऑफ रियल मैड्रिड, ही ऑलवेज ब्रिंग्स रियल मैड्रिड इज इंटरव्यू बट वी डिड नॉट सी। नहीं नहीं पुकार, देखिए आई अंडरस्टैंड द रियल मैड्रिड एंड बारसा rivalry at all, मैं न्यूट्रल हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ। It was not. He was asked about Arda Guler, if I'm not wrong. And अगर पूछा गया तो बोलेगा भाई कि क्या हुआ केस. So I think he spoke about that. Unless I missed something, do let me know what I missed. And yes, let's like the stream. Devesh जैसे याद दिलाते, big up to Devesh as well. I think Laporta was talking to midfielders excluding Gundo, so DM and one another. Okay, so that's what Sadiba also explained. One DM, I think Oriol Romeo is what you were talking, and one AM attacking midfielder is what you were talking. यस ऑस्कर, वी हैव टू स्पीक अबाउट सिटी भाई, बहुत ही सस्ते में डील होने वाला है लेकिन मारेज का, विल कम टू दैट फॉर श्योर। पैब्लो तोरे विल बी लोन टू जिरोना, ओके ओके, पार्ट ऑफ द रोमेओ डील, ओके थैंक्स फॉर द अपडेट गाइस। भाई लोसेल्सो बारसा के लिए कुड हैव बीन एन ऑप्शन, सादिक भाई व्हाट आर यू सेइंग, लेकिन लुक्स लाइक ही माइट गो टू रियल बेटिस, वाओ दैट्स इंटरेस्टिंग। लोसेल्सो इन माय पर्टिकुलर ओपिनियन बहुत अच्छा प्लेयर है यार, आई डोंट नो व्हाई, मेरे ख्याल से एक मॉडर्न डे फुटबॉल का चीज हो जाता है ना कहीं ना कहीं, that certain player positions don't fit in many 11s, and that's why Lo Celso might not be in the conversation, or of course apart from the price, I think यहाँ पर maybe Spurs do not want him to go on loan is what I'm guessing. Sushant, what's up man? Animesh, हाँ ये अच्छा बोला Animesh ने, न्यूज आई है Lamine Yamal I think is extending right, by big news for Barca, not just for Vitor, okay, Lamine Yamal, a left-footed attacking midfielder, he could be your Arda Guler. Just saying he might get it. By Sadiq, by every Barca fan, Messi is good. आप लोग बोलिए, even you neutrals. I think it makes sense to have Pedri, Lamine Yamal as your camp. Then behind them you have a Gundogan, a Frankie, चलो Kessie अगर चल जाता है तो you still have a Romeu, or of course you have a Nico coming in. मतलब Gavi as the option who could play in any of the three positions. So looks like it is a possibility, unless आप सिस्टम चेंज करो, जो एक पॉसिबिलिटी है इस बार। सादिक ब्रो also Kessie due to his size, shape and yes, skin is miscast in the DM. Oh my god, he has always been 8 out of 10 even at Milan alongside either Bakayoko or Benacer. मतलब to be honest, Kessie is a good player सादिक भाई, but again मैं out of the world नहीं बोलूंगा that he is going to be a starter at a top club who's aiming for trophies यार, at the topmost level, with all due respect. And you know that by following him from Milan days as well very closely, the guy is good, लेकिन कहीं ना कहीं I think it's better for him to be in a bigger fish in a pond rather than just a fish in a larger ocean. Just saying that. I think that's the kind of person that he is. He comes out better that way. But Chelsea legend Romeo, of course, man, won the Champions League with us. Roque isn't a second striker at all, center forward. Lekin Sadiq bhai was telling him, while maybe Lewandowski is still starting towards the end of the season, I think I could see that maybe knowing Xavi, he might just but left wala cheez zyada likely hai. You have a point there, because I think that is what I've seen a little bit of clips that I see that he's more comfortable coming off the left hand side. I think that might be the alternative. So you might go 4-3-3 agar wo khele at times. That could be a possibility. Lo Celso, to be honest, should have been an option, but न्यूज ये बोल रही है भाई, ट्रांसफर न्यूज का भी डोज है इस स्ट्रीम में, न्यूज बोल रही है कि रियल बेटिस हैव अ लाइकलियर पॉसिबिलिटी टू गेट हिम बिकॉज़ ही इज बी स्टार्टिंग एट रियल बेटिस, दैट्स द डिफरेंस। नो प्रॉब्लम जातिन मैन, ऑल लव टू यू एज वेल एज श्रेय एफसी को भाई चेकआउट करिए। आम्रबात, ये लुक्स लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड वो स्टार करके रख रहे हैं, विल कम टू दैट एज वेल। तो भाई बारसा का पूरा ट्रांसफर विंडो एज ऑफ नाउ, considering they've got a good center back, a very good center back as a backup in Inigo Martinez. They've got who else? A midfielder looks like Romeo, a central midfielder who could be a defensive role, as well as a Gundogan who could do a bit of both. Okay, with that and Roque one for the future, Fresneda looks like one for the future. I think if अगर ये हो जाता है, which is looks likely, मुझे लगता है considering the finances, I am rating mighty for sure. मतलब that means an 8 out of 10 kind of transfer window, and I think that's good. From what I follow at La Masia, he's touted by the higher ups that there is big potential talent since the days of Boyan, Messi, and Fabregas. Okay, I think you're talking about whom are you talking about? I think you're talking about Lasine Yamal. I think so. Anyway, I know. हाँ बार Shreya will come to Chelsea. I'll just देखिए it's a live stream. I'll be talking literally each and every club like I always do. भाई अभी तो almost every day or daily or
alternatives करते for us to know how we go about the stream. So I'm starting the questions or comments when it comes to other clubs. We've started with Barca. We'll be comparing every impactful transfer. Yeah, definitely. I agree with that. कहीं ना कहीं he might get that chance this time more than a Pablo Torre going on loan, जैसे आप लोग भी बोल रहे हैं. But Barca is also targeting Messinho Willian, the 16 years right winger from Palmeiras. Since Deco's appointment, Barca have been targeting young talents, especially from Brazil. Great approach. Yes, Deco is definitely one who's been there. But Deco has been a player or he's been an agent as well. So कहीं ना कहीं I think he'll have a lot of idea that definitely helps. और contacts भी recently होगा उसका. 100% मैं agree करता हूँ. लेकिन हाँ, चेयर की पर आएंगे, एब्सोल्युटली आएंगे. हाँ, वी आर जस्ट गोइंग क्लब बाय क्लब. लेट्स हैव सम order to the stream. By mods, you help me out here. Absolutely. And yes, Pudin as well. But again, I repeat myself for the end time. Let's stick to the topic, guys. We have started with Barca. We have rated Mighty. We'll come back to it. Barca का सबसे impactful transfer आप बोलिए. While we'll move on to the second club and we'll be comparing all the transfers of the window so far और जो होने वाला है likeliest. अभी तक मैं बोलता हूँ the most impactful transfer that will be happening in Barcelona, and I genuinely mean it, is Vitor Roque. I think Vitor Roque, the fact is he could already play in multiple positions, plus इतना young है, plus उसका इस young age में he has that physicality, looks like it. I know कहीं ना कहीं बहुत सारे reels शुरू हो गए by his great goals as well as his misses. But remember, this guy is really very young, or he had an option to go to Manchester United for 100 million यूरोस का. भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक प्रॉपर पैकेज डील दिया था. स्पर्स से भी आया था उसके लिए ऑफर, लेकिन ही इज चेकिंग टू बार्सा जस्ट लाइक आर्डा गुलर हैज गॉन फॉर रियल मैड्रिड. तो भाई रियल मैड्रिड फैंस, थोड़ा बार्सा से शुरू किया तो मैं सेकंड रियल मैड्रिड जाऊंगा, फिलहाल आएंगे प्रीमियर लीग क्लब्स पर भी. लेकिन भाई रियल मैड्रिड सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल ट्रांसफर आपके लिए, मतलब पुदिन तो बोल रहे हैं गुंडोगन रहेगा फॉर बार्सा. वेल, इट माइट बी फॉर दिस सीजन, माइट बी अ फैक्ट, बट आई जनरली बिलीव दैट Vitor Roque is definitely one for the long run and certainly a big impact. भाई लोग बोल रहे 60 million euros, it's huge, लेकिन this package 30 million base is nothing, to be honest. Talk about Real Madrid. भाई let's be real. Mbappe अगर हो जाता है तो that will be the biggest impact. Yes, Mbappe already is going to Real Madrid, which is already that level जहां पर almost हर एक सीजन चैंपियंस लीग फाइनल्स सेमीफाइनल्स, राइट? लेकिन लेट्स बी रियल, एम्बापे इज एम्बापे. और कहीं ना कहीं ये नेक्स्ट एक हफ्ता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उड़ती खबर आ रही है दैट बेसिकली अभी भाई ना उधर का ना इधर का था एम्बापे. अभी क्लियरली देयर विल बी अ डिसीजन मेड, लेकिन इट कम्स डाउन टू द रोकड़ा. हाँ, कितना दे रहे हैं भाई आपका रियल मैड्रिड, कितना दे रहे हैं? एंड लुक्स लाइक इट दैट इज डेफिनेटली अ माइटी रेटिंग इन टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर और almighty in terms of the impact. मैं बोलता हूँ Mbappe to Real Madrid. तो assuming that happens, Real Madrid भाई obviously the biggest transfer till now which has already happened this summer is Jude Bellingham. लेकिन apart from that also मैं बोलना चाहूंगा that they have done well to get in Brahim Diaz. तो एक बैकअप अच्छा मिल रहा है उनको. Asensio going, of course Asensio going is लीविंग अ होल कहीं ना कहीं, क्योंकि यस वो बंदा कहीं ना कहीं मतलब अंडरवेलमिंग बोलूंगा क्योंकि इतना कंसिस्टेंट नहीं था, बट यू नो दैट ही हैड एन इंपैक्ट इन गेम्स. लेकिन साथ साथ में यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ अटैकिंग मिडफील्डर्स, क्योंकि आर्डा गुलर उन्होंने कर दिया. आर्डा गुलर भाई किसी ने देखा ऑलरेडी ट्रेनिंग में, वाओ. द गाय इज लाइक, मतलब फॉर पीपल आउट देयर जो जानते हैं भाई अपने ऑलमाइटी फैम, people who know me very well, who have been following the channel for over a couple of years, know it. Why, when it comes to left-footed attacking midfielders and wingers, man, I have a fetish. I won't lie there, 100%. Definitely, Arda Güler is by next level in my opinion. He is superb. Lekin the point being, will he get enough in terms of the playing time? Matlab, should Real Madrid think about loaning him? Should Real Madrid think about first trying Brahim Diaz in the Asensio kind of a role? और अगर एम्बापे आ जाते हो एनीवे ईदर ऑफ देम विल बी नॉट स्टार्टर्स, ठीक है. लेकिन इधर वेज बेलिंगहम, आर्डा गुलर, आपके पास ब्राहिम डियाज, एम्बापे assuming that he comes in, right? And I think और किसको मिस आउट कर दिया? मे बी राइट बैक, लेकिन आई थिंक विनिशियस टोबियास is something that they are going with. So I think I'll have to trust the Real Madrid think tank यहाँ पर. आप लोग क्या बोल रहे हो? क्या रेट करोगे रियल मैड्रिड को? अगर हमने बार्सा को माइटी रेट किया है, अगर एम्बापे हो जाता तब तो भाई मैं तो बोलता हूँ इट्स एज क्लोज टू ऑलमाइटी, सच में बोलता हूँ तो. बट लेट्स सी.
ओके, एंड्रिक भी हम बोल रहे हैं, यस अभी के लिए नहीं है, फॉर द फ्यूचर, बट डेफिनेटली आई थिंक इन माय ओपिनियन विटर ओके लुक्स लाइक ज्यादा मोर रिसेंटली, अगेन रिसेंसी बायस बोल रहा अनिमेश, आई थिंक विटर ओके विल हैव मोर इम्पैक्ट दैन एंड्रिक, आई माइट बी रॉन्ग इन द फ्यूचर, लेकिन ये अगेन मैं ये भी बोलते हुए सुना गया आप लोग द्वारा, आई थिंक probably sure that Chelsea were after Endrick and we really wanted him badly until Real Madrid came. लेकिन लास्ट एक साल की बात करें तो आई थिंक विटर ओके हैज हैड मोर इम्पैक्ट इज व्हाट आई हियर, अगेन मैंने हर एक गेम देखा नहीं है, बट जितना भी देखा है आई थिंक more recently the under 20 South American Championship, Vitor Roque was really good. Mbappe will never leave the bonus from PSG, will end up staying and may even sign an extension. He might sign an extension and leave, bro. That might actually happen. And yes, Putin is saying Turkish Messi is what Arda Guler is all about. Man City पर आएंगे Rock Rider, we are coming to that for sure. भाई just won a treble. I don't think you need many signings, do you, Rock Rider? We'll come to that. Fran Garcia and Joselu, I forgot. Thanks, man, Animesh again. I forgot Fran Garcia or Joselu. I don't have the list in front of me, but these are good backups. I know a lot of people are saying Fran Garcia शुरू करेगा. I still believe Fran Garcia, knowing Ancelotti, he'll be a little hesitant to start with. As the season progresses, तो शुरू करेगा. लेकिन शुरुआत के सीजन में I'll be doubtful if he starts. Again, it depends on pre-season. But Fran Garcia, Joselu as potential starters or backups, अगर by chance you don't have a lot of other signings like Mbappe, लेकिन Mbappe अगर हो जाता है along with Bellingham जो हो गया है with Brahim Diaz and आर्डा गुलर, तो यहाँ भी 5-6 नाम हम बात कर रहे हैं, काफी अच्छा है मुझे लगता है डेफिनेटली. अनिमेश ने बोला 7 out of 10. ओके, आई स्टिल बिलीव दैट दे आर प्रीटी गुड. Fede and Valverde won't Fede and Ceballos won't be available for more than a month and Modric won't be a starter. Okay, but I think जब वो आ जाएंगे तब I doubt if the young signings will start. Yeah, again depends. Very good player. I wanted him at Barca, but at Real Madrid, Arda Güler will not get any chances का तो नहीं बोल सकता. Messi is good. I think it depends on जैसे समझाया ना यहाँ पर अपने भाई अभिषेक ने. I think it depends on the availability as well as the formation. Also it depends on Mbappe transfer कहीं ना कहीं. But I hear you. मैंने परसों शायद हमने किया था स्ट्रीम, उसमें बात ही क्या था आर्डा गुलर going to Real Madrid makes sense in terms of the player he is, in terms of the fitment, लेकिन in terms of the personal जो इतने सारे attacking midfielders potentially होंगे Real Madrid के, I really doubt. और हम हम term कर attacking midfielder को बहुत सारे लोग, लेकिन I think a lot of people can play in that role for Real Madrid and they don't play that role anyway. That's a little bit surprising, but it's अरे मोइन इन द हाउस बैन. मोइन व्हाट्स अप, नाइस टू सी यू ऑलवेज ब्रो. चेल्सी ने भी एक तो चेल्सी का तो बात करनी है, इसलिए मैं चेल्सी का थोड़ा सा रुक कर बात कर रहा हूँ इन डिटेल. वी हैव स्टार्टेड विद बार्सा, वी आर टॉकिंग रियल मैड्रिड राइट नाउ. तो भाई रियल मैड्रिड का रेटिंग दीजिए. और of course the most impactful transfer तो I'm definitely saying is going to be Mbappe, and I genuinely believe that that's going to happen after he signs an extension, नहीं तो नहीं होने वाला. और the reason being that PSG का कहीं ना कहीं एक डोमिनो इफेक्ट होने वाला है, बिकॉज मैंने थंबनेल में पहले डाला था अपने व्लाहोविच को, एंड व्लाहोविच में हम इंटरेस्टेड है, बट थोड़ा बहुत चेल्सी पर आएंगे अभी क्विकली एंड विल टॉक इन डिटेल लेटर. आई जेन्युइनली बिलीव दैट चेल्सी might actually just go in with Nkunku. Yes, you're hearing it right. As a striker with Jackson and Broja competing, that might be the actual starting for Chelsea. And that's why we might not go Vlahovic के लिए. Why? Because सुनने में आ रहा है that we might go for Ivan Toney, but in January, क्योंकि अभी बैन है. अभी के लिए we will not make the move. It will not be a pre-contract signing. तो Ivan Toney coming in January makes sense, क्योंकि उस समय इतना वैल्यू नहीं रहेगा उसका. Plus the fact that अभी नहीं करना क्योंकि he is someone who's banned, so we don't want to get into the wrong books of the media. ठीक है, लेकिन Ivan Toney looks like it. We might just wait. इसलिए Vlahovic might actually happen to PSG, जो also interested in Højlund है. तो Højlund, Kolo Muani और Vlahovic are the three people that they're going for. But I think PSG कहीं ना कहीं have done really good transfers. I genuinely mean it. And अभी हम PSG की बात कर रहे थोड़ा बहुत. भाई एकिटी की तो I think they have confirmed. ठीक है, तो he is confirmed for 28.5 million. चलो, he is not a new signing as such, but obviously you have Marco Asensio. Real Madrid की बात किए थे. He is someone who could play on the right wing as well as a cam. तो Marco Asensio is there. You have Kang In Lee. तो वो दोनों similar players हैं for one role. Of course they will be losing Mbappe in my opinion अभी भी, लेकिन साथ साथ में
they have got Ugarte, one guy that Chelsea wanted badly. I think that will really upgrade their midfield in terms of the defensive midfield for sure. मिलान स्क्रीनियर बैक लाइन में अच्छा बैकअप है, इफ नॉट अ स्टार्टर. ठीक है, लूकस हर्नांडेस, ही इज अ डेफिनेट स्टार्टर इन माय ओपिनियन व्हेन फिट. लूकस हर्नांडेस कम्स इन फॉर 45 million euros. अब वैल्यू फॉर मनी भी देखिए, लूकस हर्नांडेस कमिंग फॉर 45 million euros. देन यू हैव अ मिलान स्क्रीनियर कमिंग ऑन अ फ्री. उगाटे यार थोड़ा एक्सपेंसिव है 60 million में, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट इन माय ओपिनियन. थोड़ा सैलरी बहुत ज्यादा ही दे दिया, आई नो दैट. बट अगेन कैंग इन ली और असेंसियो आर coming in, apart from potentially either of Vlahovic, which is likeliest in my opinion, around 75 million euros होने वाला है, or if not him, a Colomwani or even a Højlund, one of them. अगर Højlund नहीं जाता है मैनचेस्टर जो likely लग रहा है, तो आप लोग बोलिए. PSG arguably have been one of the best transfers. मैं genuinely बोलता हूँ. I know they've lost Messi and they might lose Mbappe. It's huge. Definitely Ramos भी huge है. लेकिन in my opinion, under Luis Enrique, which is a transfer in himself, Luis Enrique coming to PSG, I genuinely believe they are going to the next level. आएंगे Gvardiol पर आएंगे Nibbles, don't worry about that. संजीव तो बोल रहे 7 out of 10 if Mbappe happens. हाँ, कहीं ना कहीं Mbappe brings a lot of baggage अगर Real Madrid जाता है, but either ways I think PSG are doing well. Talk about Real Madrid as well, लेकिन कोई नहीं. Maybe अनिमेश आते हैं. ऑफ टॉपिक क्वेश्चंस लेंगे भाई थोड़ा, as it is there's so much to be discussed. We discuss every club, my bros. Again, big up to the members and mods, of course. Again, we have moved over Real Madrid and Barca for now. Let's talk PSG. We'll come to the Premier League clubs as well. Bye, guys. PSG का देखिए. Love SC 22 0 out of 10. Come on, bro. भाई लुइस एनरिके गया. लुइस एनरिके जनरली रेट है यार. मजा अच्छा. I know he's not like a एकदम elite level manager नहीं है, लेकिन just below है. Just below है. When I say एकदम elite level, when I say एकदम elite level, I rate Pep Guardiola, Ancelotti, maybe even Klopp right now. I think that is what you're talking, the elite level managers. अगर Zidane होते तो I would rate him as well. लेकिन I think Luis Enrique is just below, along with Jose Mourinho आज के दिन में, as things stand. Current situation के हिसाब से बोलते तो I think he's definitely right up there. So I think that's the biggest signing in my opinion. Apart from potentially, like I said, either व्लाहोविच ला सकते, या अगर नेमार खेले स्ट्राइकर विद लैक ऑफ पेस दीस डेज थोड़ा बहुत एज इयर्स गो बाय. अगेन अभी भी जॉ फिलिक्स में इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं कि नहीं. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी जॉ फिलिक्स के लिए जाए अगर उनको नहीं मिलता है सॉलिड स्ट्राइकर लाइक अ व्लाहोविच और अ कोलोमुआनी और इवन अ Højlund. ठीक है. If PSG is able to sell Mbappe for good money, it's a 9 out of 10. That's the deal. That's the deal. He needs to sign that extension and definitely take his bonus at the same time. Go for big money. Newcastle पर आते हैं अर्पण. We'll come to that as much as time permits. Again, भाई सब लोग let's hit that like button. जैसे यहाँ पर गौरव याद दिलाया. Thanks गौरव. Big up यार, always supporting the channel as well. Let's hit that. Have we gotten to our target, guys? We have a like target on the screen. I hope you guys are able to see it. Let's get there, my fam. Kimmich Chelsea blue. अरे नहीं यार, नहीं सपना मत दिखाई भाई, सपना मत दिखाई. चेल्सी ब्लू नहीं होने वाला, नहीं होने वाला. That's how it is. They will no longer have to handle the issues of Mbappe after that. That's a good point. Again, Luis Enrique might be the main man, or that is what PSG wanted. In my opinion, मैं रेट करूंगा PSG का definitely mighty है. मतलब borderline almighty मैं बोलता हूँ, इतना अच्छा. Despite losing Messi and Mbappe, कौन सोचा होगा? They genuinely have done. और भाई हम बोल रहे एक और यंगस्टर एंडूर, क्या नाम है उनका भाई, जो बेंफिका सा है. He has been rated among the top 25 young midfielders of the world in the last 24 months. He's that level of midfielder. और already उनके पास Zaire Emery है. I think they're having a good squad. Don't get me wrong. Zaire Emery is also a midfielder who played as a wing back against Bayern Munich. आपको याद है. PSG, in my opinion, will definitely ball this time. With Luis Enrique being there is the main thing. नहीं, जॉ फिलिक्स अगर आता है then Neymar will probably move to a false nine position with Joao Felix off the left hand side and with them rotating. लेकिन वो secondary plan B है उनका. Plan A, I hear Animesh that they are most interested in Vlahovic now, and in the center forward role, if not Vlahovic, they will go for Colomwani or a Højlund. अगर वो नहीं होता है then Joao Felix. That's how the plan ABCD उनका है.
Theo Hernandez, Skriniar, Kangli, Sensio, decent window. I think it's pretty good with the manager coming in. But again, Messi's got to ball. PSG is building a good squad with Skriniar and Lucas. They have sorted the defense. Plus, they have also sorted the midfield. They need a good striker, and if they get Silva, then a 8 out of 10 window. Yes, लेकिन सबसे ज्यादा impactful ट्रांसफर ये तो नहीं होने वाला, जैद नहीं होने वाला मुझे नहीं लगता. लेकिन सबसे ज्यादा impactful ट्रांसफर कौन सा होने वाला for PSG? Again, I can say one player or the other. I definitely believe it will be Luis Enrique to PSG. That is the most impactful transfer for me. और वो एक जाता है, elevate करता है PSG's chances in the Champions League. I genuinely believe that. Let's see. PSG transfers for future, not for present. Again, that's why they have an experienced manager coming in, and I hope it helps for PSG's sake. Not that I'm a PSG fan, I'm not. Just saying. Martial को ले ले PSG तो बढ़िया होगा. नहीं यार, बहुत injury prone है, बहुत ही. I think Vlahovic looks most likely, to be honest, considering that क्योंकि यहाँ पर असेंसियो है. असेंसियो ऑल्दो लेफ्ट फुटेड है, जो राइटिश खेल सकता है, लेकिन ही जनरली प्रिफर्स टू कम सेंट्रली. तो Vlahovic being a left footer can also move a little bit wide. तो वो I think would work well as a duo. I genuinely believe that might work better in my opinion. Although मैं चाहता हूँ Vlahovic चेल्सी में आ जाए. पुदेनार भाई चेल्सी पर आ जाते हैं थोड़ा बहुत. लेट्स कम टू द प्रीमियर लीग. हमने अभी तक कितना कंपेयर किया, तो हमने रेट किया था भाई बार्सा, रियल मैड्रिड, पीएसजी. कहीं ना कहीं तीनों को माइटी हमने रेट किया. बट अगर मैं नंबर्स के हिसाब से बोलूं, आई वुड से कंसीडरिंग द अमाउंट ऑफ मनी दैट बार्सा हैड, आई वुड रेट देम, अगर हो जाए सब ट्रांसफर्स व्हिच इज इन लाइन, फॉर द फ्यूचर 9 out of 10, लेकिन फॉर प्रेजेंट 8 out of 10. फॉर रियल मैड्रिड आई थिंक अगर एम्बापे हो जाता है, आई एम रेटिंग देम डेफिनेटली अ 9 out of 10. नो टू वेज अबाउट इट. और अगर पीएसजी का हम बात करें तो आई वुड डेफिनेटली रेट देम आउट ऑफ सिमिलर टू रियल मैड्रिड. दैट्स अ सरप्राइज, यस, बट दैट्स व्हाट आई फील जनरली. लूचो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड ही इज वन टू, या बिल्कुल. आई थिंक ये एक डिफरेंस मेकर है जो मैं हायर रेटिंग कर रहा हूँ पीएसजी का. सादिक भाई दैट्स भाई, यहाँ पर बाढ़ पड़ रही है यार, बैंगलोर में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है. मैं खुद भीग कर रहा हूँ हर स्ट्रीम में, ऑलमोस्ट आज भीग कर आ रहा हूँ आजकल. दिस इज लिटरली. ब्लू तो बोल रहे हैं मैसिव सैलरीज, मैसिव ईगो, बट आउटपुट नॉट सो मैसिव. यस, the difference is this time they are not going for massive names. There's a huge difference. They have almost gone the previously Chelsea, Man City and now Newcastle way in this window. आप देखो Asensio, आपके Kang In Lee, again Ugarte, these are not names जो एकदम box office names है, but these are very good players, trust me on that. इंटर पे आएंगे दिशांत, एब्सोल्युटली इंटर पे भी आएंगे as much as possible, as well as Bayern Munich. Yes, one Abbas Mudit in the house. Welcome, welcome. भाई अगेन जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, check out our post bro about memberships. Big up to all the members here already who have been supporting the channel, who will be supporting the channel hopefully, because we have a new level as well. Do check that out as well as a perk. बहुत I think we've had about 6 to 7 people completing a year. That's great. Hopefully continues, and even for existing members, big up यार, all for future members as well. बायन पर आते हैं, लेकिन चेल्सी पर थोड़ा आ जाते हैं भाई. आधी घंटा हो गया, चेल्सी के बारे में बात नहीं किया. चेल्सी मिलान के बारे में थोड़ा बात करेंगे अभी थोड़ा बहुत, ठीक है एवरीवन, मेरे क्लब्स, कम ऑन. तो भाई चेल्सी का पहले बात कर लेते हैं. एब्सोल्युटली, मतलब इट्स अ वेरी मिक्स्ड विंडो. यू कैन आर्ग्यू दैट हमने बच्चों को इकट्ठा कर लिया है, बेसिकली लॉट ऑफ यंगस्टर्स दैट वी आर साइनिंग. ऑफ कोर्स पीपल आर फॉरगेटिंग, जैसे मैंने बोला दैट जो एंडूर है, हाउ डू यू प्रोनाउंस हिज नेम, आई डोंट नो, जो पीएसजी ने साइन किया मिडफील्डर, भाई बढ़िया प्लेयर है. वैसे ही Angelo Gabriel, he has been rated in the top 25, wingers in the world in that age group in the last 2 years. So Angelo Gabriel for youngsters will be big in the future, but not just him. Diego Moreira को हमने साइन किया है. That's a great signing in my opinion. Benfica से आया and it's not much money. दोनों around 15 million हम साइन कर रहे हैं. Plus, if I'm not wrong, Matthias Franca also we are going for him. We have signed a couple of young defenders as well. One from Everton, I remember. तो भाई काफी youngsters को हमने साइन किया already January window से. मैं क्यों काउंट कर रहा हूँ January window वाला, क्योंकि वो लोगों ने खेला नहीं है. तो it's like a new signing for Chelsea. Andre Santos, he is the huge signing. मैंने पोल डाला आज, क्यों Andre Santos, भाई अगर ये चल पड़ा ना बंदा, this guy could literally do a Bellingham. He could be a number 6 / a number 8 / a number 10. That's how good he is, Andre Santos. Trust me, he's that good. Again, I'm not going to claim कि मैं हर एक मिनट देखा उसका हमेशा, लेकिन बहुत ज्यादा देखा हूँ क्योंकि बहुत समय हो गया Andre Santos को साइन किए हुए. और भाई I've been waiting for this guy to come. Of course, time will tell whether he'll acclimatize himself to Premier League. But trust me, this guy, जैसे हम बोल रहे हैं बारसा के लिए विटर रोके, आर्डा गुलर, जैसे हम बोल रहे हैं फॉर रियल मैड्रिड, this is the top level signing, guys. I'm telling you, along with Christopher Nkunku. People are forgetting, yes, Nicholas Jackson is the
ऑफिशियल ट्रांसफर ऑफ दिस विंडो फॉर चेल्सी एज अ स्ट्राइकर, लेकिन वो स्टार्टिंग स्ट्राइकर नहीं है. आई जेन्युइनली बिलीव दैट जो न्यूज आ रही है अबाउट टोनी टू चेल्सी इन जनवरी, I think that probably means that Broya or Nicholas Jackson will fight it out. But in the end, we might have to settle for the timing because Broya is coming back from injury with an Nkunku starting. I'm telling you, Nkunku, Andre Santos, with basically maybe another midfielder, bhai, it's not too bad. अगर आप देखो तो with Enzo, behind and Caicedo behind. Just think about it. It's actually quite good. अगर आप देखो तो, अगर आप put in the case of Pochettino to Chelsea, again jury is out, लेकिन थोड़ा excitement आ रहा है धीरे धीरे, not gonna lie, लेकिन not as much as what it would have been, say for example, Luis Enrique to Chelsea. I'll be very honest. ठीक है, लेकिन he likes to work with youngsters and these are the guys. Problem है कि experience कहाँ है. Again, maybe Ivan Toney को हम इसलिए चाह रहे हैं आए जनवरी में, लेकिन talk about him. Why aren't we going for Mitrovic? I know कहीं ना कहीं बहुत ही red hot head है उसका. Mitrovic भाई, Saudi clubs are bidding 30 million and all for Mitrovic, a proven Premier League striker. भाई shocking man. मतलब talking about Saudi man, I know Liverpool पर आएंगे. Liverpool bro आपका Henderson captain mind change कर दिया looks like it, and we'll come to it. No hate, but I'm just saying it's a fact. Let's see. Matthew तो बोल रहा है I want Vlahovic if Kane leaves. Okay. Dybala to Chelsea. Yes, and that हम जो बोल रहे हैं attacking midfielder, it could be a second striker in the name of Dybala. तो भाई Dybala to Chelsea अगर ये हो जाता है, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू से दैट Dybala will elevate us totally. मतलब मैं जो सब्जेक्ट लाइन टाइटल डालूं ना इस वीडियो का, आई डोंट थिंक Dybala is going to elevate us totally. Why? The reason is because Dybala जब खेलता है बढ़िया प्लेयर एकदम, और उसका स्ट्रेंथ और वर्क रेट टेनासिटी इंप्रूव हुआ है विद रोमा अंडर जोसे मोरिन्यो डेफिनेटली. लेकिन याद रखिए लास्ट सीजन के स्टैट्स भी क्या बोलते हैं, ही स्टिल प्लेड ओनली 20 odd गेम्स फॉर रोमा द एंटायर सीजन. दैट इज अ क्वेश्चन मार्क. ही इज वेरी इंजरी प्रोन. लेकिन एट 12, चलो बढ़ा के 20 मिलियन भी बोल देते हैं भाई, आई थिंक इट्स डेफिनेटली वर्थ इट. और द फैक्ट इज, पुदिन यहाँ बोल पूछ रहे थे व्हाट अबाउट द फैक्ट इज एंजो and Thiago Silva are vouching for Dybala, not just Pochettino. मुझे लगता है I am rating this transfer to happen as mighty, और even the fitment मैं बोलता हूँ mighty. Why? Because it depends on Poch system. अगर Poch खिलाते with a typical 4-2-3-1, then he might be the best in behind Nkunku. Him and Nkunku kind of shifting positions. लेकिन अगर हम खेलते हैं with a 4-3-3, is he an ideal wide man? I'm not too sure about that, and that's why मैंने किया mighty and not almighty. But I genuinely believe उसने स्टेटमेंट दिया है कि आई एम स्टिल अ रोमा प्लेयर, आई विल बी देयर इन रोमा नो मैटर व्हाट. लेकिन याद रखिए जो एक फैन मिला था उनसे, एक इंटरव्यू लिया था, आई थिंक द मोमेंट ही आस्क्ड आर यू कमिंग टू चेल्सी, द स्माइल टोल्ड इट ऑल इन माय पर्सनल ओपिनियन. तो अनलेस रोमा कहीं ना कहीं ऑलरेडी बहुत बढ़ा दे उसका प्राइस, ही इज कमिंग टू चेल्सी. व्हाई? बिकॉज अ सर्टेन लुकाकू. अगर लुकाकू चेल्सी में रहता है तब तो भाई घंटा है अपना सीजन का ट्रांसफर. एब्सोल्युटली. दिशांत बीइंग एन इंटर अल्ट्रा इज सेइंग लुकाकू नहीं चाहिए भाई. और भाई इंटर मिलान, शर्म कर लो. सॉरी दिशांत मैं बोल रहा हूं, शर्म कर लो. आप लोग को 100 कितने 110 मिलियन यूरोज मिले थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 97 मिलियन पाउंड्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट भाई. क्रेजी मनी, दैट्स एब्सोल्युटली क्रेजी मनी आपको मिले थे. आई नो दैट कहीं ना कहीं ही इज नॉट द प्लेयर व्हाट ही वाज एट द टाइम व्हेन चेल्सी साइंड हिम. लेकिन सीरियसली आप लोग 30 मिलियन दे रहे हो इंक्लूडिंग एड ऑन्स. भाई क्या यार, इटालियन भाई, इटालियन फुटबॉल, आई लव यू ऑल बट कम ऑन. पुलिसिक गोइंग फॉर 20 मिलियन, 19 मिलियन इनफैक्ट. भाई लुकाकू गोइंग फॉर 30 मिलियन, नॉट हैपनिंग ब्रो. पुलिसिक एज इट इज, मुझे लगता है पीपल डिसएग्रीड व्हेन मैंने स्टोरी डाला था. ट्रस्ट मी, क्रिश्चियन पुलिसिक कमिंग एट 19 मिलियन इज अ रॉबरी. ट्रस्ट मी इट इज. यस, बंदा बहुत ही इंजर्ड रहता है, जैसे हमने बात किया दिबाला के बारे में, बहुत ज्यादा इंजर्ड रहता है और इंपैक्ट है उसका. लेकिन इसी दैट लेवल प्रॉब्ली नॉट कंसिस्टेंट इनफ. ठीक है, लेकिन इज बिन देयर डन दैट एंड ही इज कैप्टन अमेरिका. ही सेल्स अ लॉट ऑफ जर्सीज. आपके लिए रेवेन्यू देगा, whether he play starts or not, he'll give you revenue. Christian Pulisic, trust me on that. I've lived in North America previously. I'm telling you, this guy is worship like anything. So similar to that, Lukaku, first of all, I believe Inter fans, not everyone but a lot of fans love him as well. ठीक है, he will sell jerseys. Plus the fact that Lukaku भाई, आपका इतना ज्यादा प्रॉफिट, कहीं ना कहीं मुझे लगता है Lukaku entire saga, भाई झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत कुछ तो गड़बड़ वाला सीन है ब्रो. इंटर मिलान का मास्टर प्लान हो सकता है कहीं ना कहीं, लेट्स सी. लेकिन 30 मिलियन में मना कर दिए, चेल्सी ने मना कर दिया कि भाई क्या समझा हमने, लड्डू पेड़ा है क्या? 30 मिलियन में नहीं आने वाला.
नहीं, ही विल कम टू चेल्सी बट उसका पोस्टपोन कर दिया गया, 4 दिन और बाकी है उसको आने का, just similar to Aubameyang and Ziyech. We are trying to get rid of all the three. Looks like it. Chelsea should give academy star some time. Yeah, bilkul, bilkul. Bessie's got bowler. Chelsea is doing a good job in selling players, but till now they have not signed any experienced players. Exactly, that's the main problem. इसलिए मैंने बोलता हूँ it's top transfer window. Yet they need a CDM and still not going for an experienced one. Moreover, they need a good striker. भाई Caicedo का ये बता देते हैं. I know he's not a pure pro CDM, but he's a number 6 who could play in a double pivot very well. In fact, proven Premier League player. Enzo Fernandez and Caicedo looks brilliant as a pair for me. ठीक है, अगर आपका एक प्रॉपर कैम होता है in front and looks like Gabri Vega, may not happen because we might actually get a better second striker in Dybala. Gabri Vega is more like a number 8, लेकिन we might just go with that. Ryan Cherki looks like, हाँ, Chelsea ने manifest किया था ये वाला story. तो अगर Ryan Cherki आते हैं as a backup to the Dybala who can be a number, not a number 10, I would say more like a second striker almost, with us maybe having a little bit of, what do you say, एक अटैकिंग प्रोवेस, तो आपका एक बैकअप प्लान होगा रायन शेरकी हु कुड बी अ नंबर 10. तो आई थिंक इज अ गुड प्लान. आई थिंक इज अ गुड प्लान. दिबाला लाता है आपका एक्सपीरियंस और रायन शेरकी आपका लाता है द अननोन टू फुटेडनेस लाता है, वेयर दिबाला इज लेफ्ट फुटेड. आई थिंक टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स है. प्लान ए प्लान बी बनता है, लेकिन वी नीड अ डीएम. आई एग्री विद मेसीज गुड कमेंट. हमें एक और डीएम चाहिए होगा. वी कैन नॉट मेक डू विद व्हाट वी हैव. हमारे पास कोई नहीं यार. एंजो फर्नांडिस और काइसेडो बस. हाँ, कहीं ना कहीं एंड्रे सैंटोस कहाँ है इस कॉन्वर्सेशन में. आई थिंक मे बी एंड्रे सैंटोस कैन प्ले इन अ 4-3-3 बेटर मोर देन अ 4-2-3-1. तो आई थिंक वो एक प्लान बी, प्लान सी में यू हैव एंड्रे सैंटोस और चेरकी एंड दे आर यंग इनफ. हर एक गेम शुरू करना एक्सपेक्ट नहीं करेंगे. आई थिंक दैट्स डिसेंट, बट अगेन एक्सपीरियंस इज की. वहां पर दिबालाज एक्सपीरियंस विल बी की इन माय पर्सनल ओपिनियन, और Nkunku starting will be key as well. Sterling सुनने में आ रहा है कि he'll be a starter as things stand, whether we like it or not. Or the difference being that can we get some more experience? Apart from that, not sure. Goalkeeper I liked, लेकिन for whatever reason we're letting Onana go to Manchester United, और वो जाने वाला है. Manchester fans don't worry about that. लेकिन हाँ, Dybala, come on, Barca want to sign Andre Santos on loan. I also want to do a lot of things. लेकिन Chelsea hierarchy genuinely believe Andre Santos is the current and the future, and we have waited already 6 months यार. टॉप एंड स्पेशल व्हाट, क्या कमेंट है ब्रो. वी नीड कैसे आमराबाद. भाई बहुत अच्छा पॉइंट है पुदिन का. प्लान है, प्लान भी परफेक्ट होगा, लेकिन आमराबाद लुक्स लाइक ही माइट गो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर व्हाटएवर रीजन. एंड देवेश टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, obviously supporting this channel. Let's like the stream. भाई सब लोग like button दबा दीजिए. Have we gotten to 175 likes? Come on, let's get to 175 likes. कितने likes हो मेरे fam? Do help me out. My mods, certainly big up to you, everyone who's reminding us that, as well as liking the stream. ये क्या है जेराटो, तुम्हें चाहिए था तो ढिंडोरा क्यों पीटा? किसके लिए बोल रहे हो यार? आप आपस में बात कर रहे हो क्या? एंजो पर्सनली टेक्सटेड दिबाला. मैं बोल रहा हूँ ना, पर्सनली टेक्सटेड लीव. भाई तियागो सिल्वा तो ओपनली बोल रहा है यार, और क्या चाहिए? टिल नाउ आई वुड रेट चेल्सीज विंडो 6.5 आउट ऑफ 10. अरे भाई, तो अभी 4 क्लब अभी तक किए. याद रखिए, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, चेल्सी का people might not believe it, but we actually have made 5 signings. 5 signings, yes, for the first team. Nkunku, Andre Santos, जो हम जाने नहीं दे रहे as per the reports. Levi Colwill, जो भी हम believe कर रहे, he's going to stay. Hopefully changes his commitment to Chelsea. Malo Gusto, backup to Reece James, जो injury prone है, and Nicholas Jackson. तो Nicholas Jackson, Nkunku, Santos, Gusto, Colwill. Outgoing लेकिन बहुत ज्यादा रहे. And these are players who know Chelsea in and out. Of course, Havertz to Arsenal will come to Arsenal. Mount to Manchester United will come to Manchester United. Kante to Saudi. Kovacic to Man City will come to them as well. Koulibaly to Saudi. Mendy to Saudi. Pulisic to AC Milan and RLC to AC Milan. Apart from Joao Felix और Zakaria Good जो गए हैं. तो बहुत सारे लोग गए हैं, लेकिन we have made about 5 signings, and Broya also मैं count करूंगा maybe 6 signing who could definitely do a lot of help up front. अगर हम कर देते हैं with that, Dybala, which I think is likely, and Cherki with another midfielder, तो भाई ये बन जाएगा. लेकिन वो मिडफील्डर कौन है भाई? Caicedo is what I'm guessing. तो भाई लेकिन is it enough? Does that mean कि हमारे जो बैकअप सेंट्रल मिडफील्डर्स होंगे, they are not as experienced? That's a problem. That might be the issue. So I get Messi's GOATs rating. देखते हैं.
बहुत टाइम लग रहा है कैसेरो के लिए। भाई हो जाएगा, 80 मिलियन में हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू 70 मिलियन पाउंड्स में दे हैव नॉट अग्रीड एज अ बेस प्लस एड ऑन्स। सो यहाँ पर दे आर आस्किंग फॉर आई बिलीव क्लोजर टू 100 मिलियन पाउंड्स। मैं बोल रहा हूँ 80 मिलियन में हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू गौरव भाई, हियर वी गो कैसेरो टू चेल्सी। आई नो बहुत अर्ली डेज, आई एम जंपिंग द गन बट आई एम टेलिंग इट। अगर वो नहीं होता तो भाई टाइट है फिश बस। ओके, नेक्स्ट कैप्टन, हाँ अगेन रीस जेम्स। उसका जो कैंप है, दे हैव गॉन वेरी वोकल दैट दे हैव टू बिकम, एज इन दे आर रेडी टू बिकम द कैप्टन, एज रीस जेम्स इज रेडी टू बिकम द कैप्टन। लेकिन मुझे लगता है अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग, कंसीडरिंग द स्पेनिश कनेक्शन, आई डोंट नो, मुझे एक ऑड फीलिंग आ रही है टू बिगिन विद। आई नो इट कुड बी द नेक्स्ट जॉन टेरी ऑफ चेल्सी, रीस जेम्स, बट आई डोंट सी हिम एज दैट प्लेयर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज ब्रिलियंट, ऑसम, ही लव्स चेल्सी, लेकिन जॉन टेरी वाज अ वॉइस। मुझे लगता है, आई डोंट, मुझे बहुत स्ट्रेंजली फीलिंग आ रही है दैट जब थियागो सिल्वा पिच पर रहेंगे तो he'll be the captain, if not it'll be Kepa. I think Kepa will be, and that's one of the reasons why Kepa is not let go, apart from not getting a buyer, वो भी है। Dybala will be tricky, पहुंच में है भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ Dybala अकेला is not the answer. क्योंकि Dybala comes with a lot of injuries. We need a youngish Ryan Cherki as a backup for sure. Two different players. And a number 6, yes, I agree. कहीं ना कहीं हमें चाहिए काइसेडो, एक मिडफील्डर, दिबाला, चेरकी, आई थिंक, एंड अ स्ट्राइकर। दिस इज आइडियल थिंग। और स्ट्राइकर लग रहा है आइवन टोनी फॉर जनवरी, लेकिन काइसेडो अभी के लिए, और दिबाला अभी के लिए, चेरकी अभी के लिए। एक और मिडफील्डर कौन आएगा आप लोग बोलिए? अगेन बहुत सारे नाम है, बट लाविया के लिए आई वुडंट पे हिम 50 मिलियन फॉर साउथहैम्पटन मैन, कम ऑन। 50 मिलियन बहुत ज्यादा है फॉर लाविया, कम ऑन, फॉर एज अ बैकअप दैट टू। मसादिक भाई बिग बैन, सादिक भाई यहाँ पर भाई अपना चैट ना, चैट ने सेकंड किया है। वी विल बी ऑब्वियसली, होपफुली विल गेट टू, भाई विद ऑल योर हेल्प एवरीवन हियर, विल गेट टू क्लोजर टू 15K, पुटिंग ऑलमाइटी ब्लूज एंड ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस पुट टुगेदर। तब हम करेंगे अपना मर्च लॉन्च, एंड दैट विल बी घंटा गैंग। यू नो दैट एब्सोल्युटली मेरे भाई। पुलिसिक इज गुड फॉर स्क्वाड डेप्थ, हाँ, बट टॉक अबाउट मिलान ब्रो भाई, to be honest, they have got a central midfielder from AZ Alkmaar, looks like it. Decent player है भाई, Dutch central midfielder है भाई, decent player. I would not say it's a great player, but it's an option. तो वो या Ruben Loftus-Cheek starts, but मैंने आज पोल डाला था, Luca Romero. People who follow Serie will know what I'm talking about. Luca Romero is someone who's actually got quite a few appearances already at the topmost level in Serie. भाई काफी यंग बंदा है। इफ आई रिमेंबर, ही हैड अ रिकॉर्ड ऑफ बीइंग वन ऑफ द यंगेस्ट एवर इन सम कंपटीशन। आपको जानता है तो बता दीजिए। लूका रोमेरो इज एन अटैकिंग मिडफील्डर हु प्लेड फॉर लाजियो इन सेरिया लास्ट सीजन। भाई काफी अच्छा प्लेयर है, मिलान हैव गॉटन हिम। तो भाई बिहाइंड जिरू यू विल हैव अ लूका रोमेरो स्लैश पुलिसिक, ठीक है, दैट इज व्हाट इट लुक्स लाइक। पुलिसिक मे स्टार्ट राइट, लेकिन उसका प्रेफर्ड पोजीशन नहीं है। प्रॉब्लम है कि राइट विंगर अभी भी इश्यू है। सो डज दैट मीन दे विल गिव चार्ल्स डी केटलारे वन मोर ऑप्शन टू बेसिकली स्टार्ट इन बिहाइंड एंड पुलिसिक स्टार्ट्स राइट विद लूका रोमेरो बीइंग द प्लान बी? वो क्वाइट पॉसिबल है, विद लॉफ्टस चीक you know definitely being one of them for sure. And I think Reinders जो है वो रहेगा as an option in midfield. Of course they lost Tonali, big loss मिलान के लिए। लेकिन अगर मैं मिलान का बोलूं ओवरऑल, कंसिडरिंग जो बारसा का बोले थे जो पैसे है उसके हिसाब से, नॉट डन टू बैडली इधर। Pulisic coming for 19 million is a steal. Loftus-Cheek, yes, is not that player what he promised us few years ago. लेकिन Loftus-Cheek for Serie is quite good considering वहां पर टोमोरी है, जीरू है, पुलिसिक है, he's played with them. Remember that matters a lot. कहीं ना कहीं that matters a lot. और जैसे मैंने बोला, राइंडर्स, लूका रोमेरो, I think these are some decent options. I think Milan have done a good job. Problem अभी भी राइट विंग है मिलान का। अगर मिलान राइट विंग एड्रेस कर लेती है, आई नो कहीं ना कहीं एक और मिडफील्डर आप आइडियली चाहोगे विद कमाडा टॉक्स स्टॉलिंग कहीं ना कहीं, बट आई थिंक दे आर decent for Serie. I would still say Milan will get top 4 next season. I genuinely believe that, or I am rating them, I think, a 7 out of 10. कहीं ना कहीं I think it's even better than Chelsea, मैं बोलना चाहूंगा, despite losing Tonali. जो पैसे मिले भाई 65 million euros for Tonali, just saying. Ankit bhai, one thing please don't mind, but no club will go for Lukaku even for free. Only Inter might go, but if मैं इंटर की बात कर रहा हूँ ना, by the way, I don't agree with this. Serie teams will go for him. Juventus is a proof. Juventus अभी भी interested है apart from Saudi. लेकिन प्रॉब्लम बीइंग दैट पैसा कितना देगी? अगर इंटर सच में जाती तो दो भाई, थोड़ा बहुत और पैसा दो।
Ziyech देखिए भाई, one player that I always wanted to do well, but talk about Milan, I think भाई Ziyech अगर वो सऊदी जाने को तैयार था in what 10 million if Chelsea was ready, why isn't Milan again interested in Ziyech? I have no idea. I think that would have been a brilliant signing for AC Milan. By 45 million, I would say 40 million euros plus 5 million add-ons is perfect for, it's okay for Lukaku. It's still भाई कितना है? It's still about uh, कितना, less than half year, less than, I think 25% of what he cost is, almost 25 तो नहीं बोलूंगा, 30% हुआ क्या, 40% of what he cost us. Fair enough. And yes भाई क्या बात है, एक सेकंड, 50 मिनट से हम लाइव है, 85 लोग देख रहे हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं. That means that you want to hear out some news, you want to discuss some things with me, you want to see your comment, you want to basically discuss and rate yourself भी, सब लोग भाई, it's an almighty fan, it's a fan channel for all to see. और हम लोग हर एक क्लब डिस्कस कर रहे हैं. We have started from what? We started with Barca, then we went to Real Madrid, then we went to PSG, then we did Chelsea, and we are doing Milan clubs अभी, ठीक है. तो भाई सब लोग, let's hit that like button, and we're coming to the other teams as well in the Premier League और बाकी leagues भी, Bayern Munich as well. भाई सब लोग, let's hit that like button. Can we have everyone like the stream? और भाई ये आपका टारगेट है, let's hit that like target. Everyone on the screen आपको दिख रहा है, ठीक है सब लोग. और people have missed out beginning part, Barca, Real Madrid etc. We'll come back to it. मैं स्टार करो कुछ questions. काइसेडो का डील कब होगा भाई? आई एम टेलिंग यू इट विल बी डन बिफोर द एंड ऑफ जुलाई. हाँ सूरज, आई एम टेलिंग यू, सिंपल एज दैट. सेजार कैसेडाई विल बी गोइंग ऑन लोन. आई थिंक टॉक अबाउट इंटर मिलान, यहाँ पर सेजार कैसेडाई जो इंटर मिलान से लाए थे, आई थिंक ही विल डेफिनेटली गो ऑन लोन. प्रॉब्लम है कि वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ ऑफर्स फ्रॉम द चैंपियनशिप. वी वांट हिम टू प्ले इन द प्रीमियर लीग एंड देन वी विल बी लेट हिम गो. अभी बहुत टाइम है यार, देयर विल बी ऑफर्स कमिंग. ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, बहुत अच्छा उसका अंडर 21 यूरोस गया था, राइट? अंडर 21 यूरोस था क्या, सॉरी कौन सा चैंपियनशिप था, जो भी था. एडसन अल्वारेज गुड है, ग्रावेनबर्ग भी, बट अगेन अगर हम एडसन अल्वारेज को लेते हो तो भाई माई ओनली पॉइंट इज गुड एंड आई लाइक हिम, बट should we not have signed 25 million pounds या 30 million euros में Zakaria as a backup? He knows Chelsea as well by now. मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ. ग्रेवेनबर्ग बैकअप नहीं लेगा, और ग्रेवेनबर्ग अगर हमें चाहिए बैकअप टू काइसेडो, वी नीड अ मोर डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर. आई डोंट थिंक ग्रेवेनबर्ग इज द आंसर, सच में बोलो तो. Could Chelsea go for David De Gea? I don't think so. Should they go? I probably will be open to it, absolutely. Thiago could leave Liverpool. चलो भाई थोड़ा लिवरपूल पर भी आएंगे, absolutely. लेकिन उससे पहले सब लोग, what are you rating the Milan club's transfers? By Inter Milan have actually done some good transfers. They've got Fratesi in central midfield. भाई काफी अच्छा प्लेयर है हम सासुओलो कमिंग इन. ऑफ कोर्स उन्होंने साइन किया है ऑन अ परमानेंट बेसिस अचेरबी एज वेल. वहां पर दे हैव आल्सो एक्सटेंडेड डिफ्राई एज अ बैकअप. अगर तुराम चीप में आया, लिटरली सस्ते पीनट्स में है, तो इंटर मिलान डिसेंट बैकअप है. बट अगर लुकाकू आ जाता है एंड दे आर एबल टू कीप लोटारो, I think Inter Milan, they have players who probably suit their system a lot. I know Aspilicueta they missed out on, but they have also signed a young German centre back, a decent one at that. भाई मैं बोलता हूँ इंटर मिलान, कंसिडरिंग द वैल्यू फॉर मनी जो है ना, पैसा लिटरली बहुत कम खर्चा है. यान सॉमर कमिंग इन प्लेस ऑफ ओनाना, नॉट आइडियल, लेकिन कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ मनी दे स्पेंडिंग, यान सॉमर 6 मिलियन यूरोस की बात हो रही है. I think AC Milan, Inter Milan, considering the money, they have done very well. I am rating both 7 out of 10. मैंने अभी तक रेट किया है भाई, आप लोग भी बोलिए. That's close to mighty. Inter Milan, AC Milan 7 out of 10. Chelsea, actually Chelsea, Inter Milan, AC Milan 7 out of 10. Real Madrid मैंने रेट किया 9 out of 10. PSG and Barca 8 out of 10 is what I'm rating. Again, going by the transfer rumors जो हम रेट कर रहे likely as well. 1 minute motivation will be coming to Liverpool for sure. Yes, Sommer is almost done in my opinion. Yeah, Animesh, that's why we have a backup, I believe. Shrey काफी, अगेन हमने चेल्सी के बारे में बात किया. विल कम बैक टू इट इफ टाइम परमिट्स फॉर श्योर. लेकिन एवरी क्लब बाइज यंग टैलेंट्स, सम मेक इट, सम डोंट, एंड आई वांट टू स्काउट प्लेयर्स instead of buying from your Benficas and Brightons in huge amounts. Okay, that's an interesting comment. भाई टॉप एंड स्पेशल आपको शॉर्ट आउट दे दिया, और मैं इतना ही कर सकता हूँ भाई. अगेन यू कैन ऑलवेज सुपर चैट माय ब्रोस, यू कैन ऑलवेज सुपर चैट, यू कैन पुट इन अ सुपर स्टिकर, एब्सोल्युटली मैं लेना चाहूंगा. लेकिन जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस है, रेलेवेंट कमेंट्स है, मैं ले रहा हूँ, देखिए जितना मुझे दिख रहा है, मच एज ह्यूमनली पॉसिबल. बट बिग अप टू एवरीवन.
Mount looks great in red. Arey, bhai, I didn't want to see that. Nitin, thanks, man. Nitin, man, thanks a lot. Discuss Inter Miami, nahi yaar. Into sports, I'm not. Delhi Ali, yeah. Hats off to the guy, man, coming out in the open. That definitely he requires some kind of treatment, I believe. Again, mental health is a very underrated thing in my opinion. Ye khali Barca sources are telling it's not going to happen in my opinion unless we miss out on Caicedo. I really will be surprised. काइसेडो का बैकअप होगा एक प्योर डीएम. लेकिन अगेन हमने बहुत सारा बात किया है अबाउट रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, पीएसजी, चेल्सी, इंटर मिलान, एसी मिलान. तो भाई गाइस, लिवरपूल की बात हो जाए थोड़ी बहुत. लिवरपूल मैंने प्रॉपर शायद स्ट्रीम किया ही नहीं लिवरपूल के लिए. हाँ यार, इस समर में आई डन स्ट्रीम्स प्रॉपर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. दोनों रेड टीम्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है, लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड. लेट्स डू दैट एवरीवन. कम ऑन एंड लेट्स हिट दैट लाइक बटन साथ साथ में. कम ऑन. लिवरपूल का सबसे पहले करते हैं भाई. उनके नंबर्स कम रहे बट आई वुड रेट दैट ट्रांसफर विंडो रियली हाई. जैसे हमने वी कैन नॉट हैव डबल स्टैंडर्ड्स. वी कैन नॉट से दैट एसी मिलान, इंटर मिलान के पास पैसे नहीं थे फिर भी उन्होंने बहुत डिसेंट नाम लिए है इनटू द क्लब बेस्ड ऑन द लीग दैट दे आर इन. if we are saying that Liverpool का नहीं है वो, because Liverpool, yes, you can argue that they have the money but they don't spend enough. Why will they want to spend? Why? Because they have people like Alexis McAllister coming in for 40 million euros. भाई ये बंदा है, वर्ल्ड कप जीत कर आया है और ब्राइटन के लिए क्या सीजन रहा है उसका. I know that I'm not going to say that he's the best number 8 that there is in Premier League abhi, but he's in the conversation. Or getting him for 40 million euros is a steal, absolutely. साथ साथ में डोमिनिक स्लोबोस्लाई जो चेल्सी, न्यूकासल भी इंटरेस्टेड थी इनिशियली, एंड देन फॉर व्हाटएवर रीजन वी डिसाइडेड, जस्ट लाइक वी वर इंटरेस्टेड इन ओनाना, वी डिसाइडेड टू lose Szoboszlai to Liverpool easily, not even fighting. ठीक है, no problem. I know लिवरपूल के पास क्लॉप है, लिवरपूल के पास you can say हिस्ट्री है in terms of 60 साल पहले. fair enough, no attacks there, fair enough. लेकिन they have Europa League as well. 70 million euros for Szoboszlai. थोड़ा underrated opinion रहेगा. In my opinion, थोड़ा बहुत ज्यादा है Szoboszlai के लिए. I think Szoboszlai is more like a 50 million player. But साथ साथ में Alexis McAllister भी 50 million player है. उनको सस्ते में लिया है लिवरपूल ने. तो कंसिडरिंग दोनों का 100 million होता, and they have spent around that same 105 million if I'm not wrong, which is quite good. I think कहीं ना कहीं as per market value उन्होंने पे किया है. तो I think these are two potential starters. Thiago, Fabinho और हेंडरसन गोइंग टू सऊदी पॉसिबल लग रहा है. इट्स ईदर OR और AUR हिंदी वाला. और भाई यहां पर 10 मिलियन हेंडरसन के लिए 10 मिलियन. वाओ, 10 मिलियन में बंदा रेडी हो गया. वाई? नॉट बिकॉज ऑफ लिवरपूल गेटिंग द ट्रांसफर फी, बिकॉज ऑफ हिम नॉट बीइंग अ स्टार्टर, द क्लब कैप्टन, प्लस जेम्स मिलनर ऑलरेडी गोइंग आउट. तो उसको लग रहा होगा भाई इट्स क्लियर व्हाट इज लिवरपूल्स फ्यूचर प्लानिंग विद द न्यू साइनिंग्स, और सैलरी उसको बहुत मिल रहा है. तो कहीं ना कहीं लिवरपूल फैंस, मैं देख रहा हूँ काफी ट्वीट्स, काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड हो आप लोग. आई नो दैट, क्योंकि हेंडरसन ने एक चीज बोला था 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले, बट दैट इज व्हाट ट्रांसफर विंडो डज टू यू. और मैं कहीं ना कहीं, आई नो यू माइट फील दैट मैं थोड़ा बहुत बैंटर कर रहा हूँ, लेकिन भाई पैसा बोलता है. और हेंडरसन जैसा बंदा आप बोलते हो, भाई व्हाट अ प्लेयर मैन, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट ही इज नॉट द प्लेयर व्हाट ही वाज इन द 2018, 19 एंड 19-20 सीजंस. बहुत डिफरेंट प्लेयर है अभी. लास्ट 2 साल से हेंडरसन हैज नॉट डन दैट लेवल कंसिस्टेंटली. ही इज बीन देयर एट गेम्स. लेकिन अगर आपको 10 मिलियन पाउंड्स भी मिलता है फॉर हेंडरसन, लिवरपूल शुड टेक इट इजीली. लेकिन will you, okay, if you're a Liverpool fan, I know he could play DM, but he's not really a DM. Henderson is more like a number 6 in double pivot or number 8. तो would you take, I think यहाँ पर Fabinho के लिए 40 million हो रहा है यार. Possible 40 million transfer is being readied for Fabinho, which is quite good money. Will you get tempted? Bajcetic आपके पास है as a CDM. Would you go for a Kefrem Turan, जो आप लिंक हो, मनु कोने? I think they will cost around 30 odd million if I'm not wrong each. Will you go for them or you would stick on to Fabinho? Do let me know in the chat. और अगर आप लोग बोलो overall, I think impactful transfers definitely है क्योंकि they are starters. Let me know. Liverpool की बात हो रही है अभी guys, so I'm just skipping the other comments because we'll try and stick to the topic, starring a few people for sure.
So far, Liverpool has had a good transfer window, but they need a centre back, and if they fail to sign a centre back, then it'll be very underwhelming window. They have to sign another centre back. Exactly. कहीं ना कहीं jury's out for Virgil van Dijk still being a starter week in week out, as much as he's the club captain right now. लेकिन looks like it. They are very interested in Mark Gehi, but knowing Liverpool, will they spend 60 million pounds on Mark Gehi? Nahi. Maybe they negotiated to 50 million. Again, will he upgrade Virgil van Dijk? He's a very good player, but is he that level? Not too sure. Levi Colwill could be that level of player. Of course, वो बहुत interested है. But Chelsea, after letting go Havertz, Mount and Kovacic to respective top 4 fighting clubs, bro. Liverpool को भी दे दो ना. तो भाई चेल्सी को हाथ जोड़ो, bro. लेवाई कॉलवेल एक तो रहना चाहिए चेल्सी में. भाई ब्राइटन जाए फिर भी ठीक है. आई नो फ्यूचर में जा सकता है लिवरपूल को मत देना. लिवरपूल फैंस लुक अवे. दैट्स व्हाट आई से. लेवाई कॉलवेल अगर आपको चाहिए तो भाई मैं बोलता हूँ 70 मिलियन. हाँ पागल खाना है, छूटा हूं मैं, बट डोंट गिव लेवाई कॉलवेल टू लिवरपूल. दैट्स ऑल. लिवरपूल नीड अ गुड सेंटर बैक. एग्जैक्टली. Lavia, I really be doubtful. Pujan, I know they're going, but is he or DM in a 4-3-3? No, I don't see that happening. Again, मैं काफी surprised जो Liverpool or Barcelona have not gone for an Amrabat, who could have been an answer compared to a Romeo for Barcelona or maybe Lavia for Liverpool. I genuinely believe Amrabat could have served the whatever the objective was, क्योंकि Amrabat brings more defensive element जो एक चाहिए in a 4-3-3. Bajcetic is great, but is he a starter after injuries? I'm not sure. Again, बहुत young है, remember that. Darren in the house, bro. Big up Darren. क्या हाल है भाई? Always good to see you, bro. Always good to see you, my bro. But एक second, भाई. Let's have the likes up, guys. मैं देख रहा हूँ likes काफी कम हुई. क्या बात है? Let's see the like target on the screen. श्रेय तो बोल रहे feel with another midfielder. Liverpool can finish top 3 secured in a 3-way title race. Wow. Okay, let's see. बाकी लोग क्या बोल रहे हैं Liverpool के बारे में? 1 minute motivation, a Liverpool fan, I guess, is saying Colwill, Gehi, Inacio, one of them will come. हाँ मुझे लगता है one of them will come, but again, either of them, I think अगर कुछ upgrade करेगा जो current backline, it'll probably be Colwill in the future. Not currently, in the future. Gehi, brilliant, but is he the level of what a Virgil van Dijk was before that injury? I'm not sure about that. Homer trolls face by saying Chelsea winning the league. If you are Liverpool, would you spend 50 million on Colwill or 50 million on Gehi? Definitely Colwill. लेकिन 50 million में आने नहीं वाला. मैंने बोला Darren, do not give Colwill to Liverpool. कम से कम what they spend for Virgil van Dijk, they have to spend for Colwill. Liverpool fans will be, definitely looking at me like this. अरे ये क्या बोल दिया? नहीं. The fact is, Colwill we cannot. हम बांट नहीं रहे भाई. हम यहाँ पर गुरुद्वारे में नहीं बैठे. With all due respect. भाई हम वहां पर नहीं बैठे, हम बांट नहीं रहे. तो लिवरपूल को देना पड़ेगा भाई. टीम्स लाइक लिवरपूल, बायर्न म्यूनिख एंड इंटर मिलान, लेट्स बी रियल, नो हेट, फैक्ट्स, बहुत अच्छा स्पेंड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बट द सेकंड थिंग इज कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, बिकॉज दे प्राइस आउट द प्लेयर व्हेन वी वांट प्लेयर्स फ्रॉम देम. नॉट इन पर्टिकुलर लिवरपूल, बट जनरली 3-4 क्लब जो मैंने नाम दिया ना, बट जब खरीदना होता है ना, बहुत चिंदीगिरी करते हैं. तो कहीं ना कहीं वो नहीं चलेगा. और ऐसे भी हमारे कंपटीटर है तो नहीं देने वाले भाई. ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. देखिए कॉलवेल, लेट्स सी, कॉलवेल टू मैड्रिड नहीं यार, कम ऑन. लाविया मोस्ट लाइकली टू आर्सेनल. आई थिंक आर्सेनल के पास ज्यादा पैसे इस बार. दैट माइट एक्चुअली हैपन. कचरा टू लिवरपूल नहीं. कचरा मींस ऑब्वियसली गैलेगर नहीं. गैलेगर का ज्यादा लग रहा है मुझे हिल स्टिक अराउंड. जो मैंने बोला है, वी डू नॉट हैव सो मेनी मिडफील्डर्स. अगर हम 4-3-3 खेले विद गैलेगर एंड सैंटोस, आई डोंट माइंड देम प्लेइंग एज स्टार्टर्स आल्सो at times. लेकिन अगर 4-2-3-1 खेले, he is not the ideal man. माउंट पर आते हैं, डेफिनेटली हम मैनचेस्टर यूनाइटेड पर आएंगे. हाँ भाई, मैं ही बनाता हूँ मेरे भाई. मोइन, बाय द वे, बिग अप यार. मोइन previously helped us in a couple of videos, I think around the World Cup time. मोइन आपने हेल्प किया था for a couple of videos. Definitely अगर आप किसी को चाहिए, any creator in the house who wants help, contact Moin unedited bro. He definitely does some good thumbnails. Moin, मैं भी आपको कांटेक्ट करूंगा वापस यार. सीजन वापस शुरू हो जाता, थोड़ा बिजी हो जाता. अभी तो मैं खुद ही बना रहा हूँ as always, लेकिन you have helped me in the past for a couple of videos, so big up to you. Ankit bhai, don't you think decision to sell Fab is harsh, judging him based on one bad season? इसलिए मुझे लगता है ना कि तियागो और फेबिनियो को वो लोग शायद रखेंगे just for their experience level and the fact that when they play well compared to Henderson जो बहुत ही ड्रॉप कर दिया था. In my personal opinion, and towards the end of the season, Fabinho थोड़ा सा पिक किया था फॉर्म जब Bajcetic coincidentally was injured. Remember that. लेकिन 40 million for a Fabinho is not a bad
वैल्यू अगर मिले तो। लेकिन सब लोग लिवरपूल का रेट करिए भाई, सब लोग ऑलमाइटी, माइटी, सो वीक या वेरी वीक ट्रांसफर विंडो, assuming that Henderson or one more midfielder goes out of Liverpool, and that one more midfielder will be either of Thiago या Fabinho, two different kind of midfielders. Already they have lost an Alex Oxlade-Chamberlain, a Milner, remember that as well. But I think कहीं ना कहीं Gomez in defense is something to be replaced yet, assuming that they get one off. कॉलवेल तो नहीं आने वाला, इनाशियो जो स्पोर्टिंग का अच्छा सेंटर बैक है, और गेही अगर आ जाते हैं सेंटर बैक, assuming that they are able to get another DM as a replacement, as a backup, that might be great. But again, मुझे लगता है लिवरपूल अभी भी jury's out. स्टेटमेंट आया क्लब का, दे नीड अनदर मिडफील्डर फॉर श्योर. आई एम रेटिंग देम, लिवरपूल कहीं ना कहीं jury's out, तो मैं कहीं ना कहीं फेंस पर बैठूंगा. आई वुड से अलॉन्ग विद चेल्सी मैं डालूंगा लिवरपूल का. हाँ, बहुत बढ़िया वैल्यू फॉर मनी है उनका, बिकॉज सोबोस्लाई आ गए, बट रिमेंबर इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट लीग, स्पेंडिंग 70 मिलियन यूरोज इज नॉट इजी. और मैकलिस्टर इज डेफिनेटली ग्रेट. जैसे मैं बोलूंगा चेल्सी के लिए यू हैव से एंकुंकू, रियली गुड. वैसे मैं बोलूंगा सोबोस्लाई है, बट अगेन येट टू प्रूव वाला चीज, डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट प्लेयर्स है. वैसे मैं बोलूंगा अगेन एंड्रे सैंटोस, मैकलिस्टर को मैं डालता हूँ, नॉट वेरी डिफरेंट. मैकलिस्टर ज्यादा प्रूवन है, लेकिन बट अगेन चेल्सी का द फैक्ट इज काइसेडो अगर आ जाता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है दैट विल बी लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर, बट फॉरवर्ड लाइन थोड़ा लिवरपूल का बेटर लग रहा है फॉर मी. तो आई एम सेइंग इट्स सिमिलर इन टर्म्स ऑफ द रेटिंग. मैं बोलता हूँ इट्स क्लोज टू माइटी, बट 7 आउट ऑफ 10 मैं बोल रहा हूँ. आई डोंट थिंक इट्स एब्सोल्युटली जो इतना हाइप किया गया ना लिवरपूल का ट्रांसफर विंडो, भाई मैकलिस्टर आ गया है. मैकलिस्टर ब्रिलियंट प्लेयर, ही इज डन ब्रिलियंटली फॉर 1 year. लेकिन along with him, Soboslai abhi bhi jury is out. I don't know if he's going to perform the way that say a Henderson performed in 2018-19, और Henderson भी थोड़ा सा hype था for a season after that. लेकिन अभी अगर सेल अच्छा करते तो why not? Purin, I agree with this. I agree with this comment 100%. तुषार तो बोल रहे mighty. Okay, let's see बाकी लोग क्या बोल रहे हैं. 8 out of 10. Wow. दिरेंद्र बोल रहे 6 out of 10. Again, वर्जिल वाइंडर, बहुत सारा जूरीज आउट वाला चीज है, इसलिए मैं भी थोड़ा सा सिट ऑन द फेंस करो. 6.5 और 7 आउट ऑफ 10 मैं बोलूंगा चेल्सी और लिवरपूल दोनों का. आई डोंट थिंक आई एम एज कन्विंस्ड. देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड येट. केशव, व्हाट्स अप मैन? केशव, नाइस टू सी यू मैन, ऑलवेज. भाई केशव, बिग अप यार केशव, नाइस टू सी यू. आप बताइए व्हाट कॉन्टेक्स्ट आई एम सेइंग. मगवायर टू लिवरपूल नहीं. राहुल तो पर यही बॉल प्लेइंग गुड बट नॉट फिजिकल, नॉट पार एरियल. भाई अगेन हम अगर वर्जिल वाइंडर का प्राइम से कंपेयर कर रहे हैं, आई डोंट सी ही इज दैट लेवल. ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, डोंट गेट मी रॉन्ग. ठीक है, बट लेट्स सी. ओके, तमीद हैज अ गुड नेम फॉर द सेंटर बैक रोल. आई वांट हजार्ड कम बैक देन डेली अली. neither will come back. लेकिन again let's go to the next club guys. 1 hour 7 minutes we are live. We should be having guys, come on, 170 likes होने चाहिए स्ट्रीम में. come on guys, कितने लाइक्स हुए? Everyone, let's hit that like button. अगर आप लाइक बटन दबा नहीं रहे हो, which is just a press of a button, nothing else, doesn't cost you. Let me know feedback in the chat. Absolutely. हमने कवर किया है रियल मैड्रिड, चेल्सी, बार्सिलोना, PSG, both the मिलान क्लब्स, लिवरपूल. ठीक है, अभी तक इतना किया है भाई. मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस कहाँ हो आप लोग? इवन न्यूट्रल प्रीमियर लीग फैंस. मैनचेस्टर यूनाइटेड, ओ माय गॉड, ओनाना. अब देखिए ये है ना, आई नो मेसन माउंट का तो रेटिंग करना ही अपने को, लेकिन द फैक्ट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड गेटिंग ओनाना, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट इंपैक्ट आइडियली. बिगेस्ट, और मार्क माय वर्ड्स गाइस, इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट इंपैक्ट इन प्रीमियर लीग ट्रांसफर्स दिस विंडो. I genuinely believe it. Yes, Onana has mistakes in him. I'm not going to say वो दूध का धुला है, लेकिन कौन से गोलकीपर में नहीं है ब्रो? By one thing with Manchester I missed, and as much as David De Gea is a Premier League legend, playing out from the back, distribution, that confidence of the back line in the goalkeeper playing that way, bhai, will go twofold. With Onana coming in. और भाई बंदे कितने में आ रहे हैं भाई? 45 मिलियन में आ रहे हैं. I'm hearing it's absolutely crazy if he comes in. Absolutely crazy. I genuinely believe जो एरिक टेन हाग बॉल आप देखते थे in Ajax, that will take to the next level with when he comes in. But again, question mark है. Mason Mount बढ़िया प्लेयर है, no two ways about it. Of course I'm hurt still the way that it happened between Chelsea and him. लेकिन is he the answer to your midfield? That is my big question.
कैसेमीरो व्हाट इंपैक्ट साइनिंग हम इंपैक्ट साइनिंग के बारे में बात करें, कैसेमीरो आर्गुएबली वन ऑफ मोस्ट इंपैक्टफुल साइनिंग्स ऑफ द प्रीमियर लीग लास्ट सीजन. Can he play that lone DM role? That is my big question. Going up year by year, can he play that lone DM role? आप अगर पूछ रहे हो, say the busy December season, I have my question marks. Fred will be going out. McTominay probably will stay. I know McTominay शायद Brighton were interested, but Amrabat will be a good backup. अगर आ जाता है, then it makes sense totally. अगर Amrabat आ जाता है, which obviously looks like possible happening, तो भाई अगर Amrabat आ जाता है, you have Casemiro, Amrabat. In front you have Mason Mount and Bruno, and of course Eriksen who could play all the three roles. Brilliant हो गया यार Manchester United के लिए. Just think about it. Højlund जो looks like yes PSG are interested, अगर हो जाता है, it gives एक proper license for Rashford to start off the left. Højlund is someone जो अभी भी prove करना बाकी है at the topmost level consistently, but he has proven it internationally. तो भाई बंदा में है दम. I think he has a left-footedness which Erik Ten Hag likes, by the way. I know Mohamed Kudus thoda bahut ab link hua tha, but I think Højlund makes more sense playing as a proper center forward. In behind you have Mason Mount, Bruno, Rashford, Anthony, or then you have options like Sancho abhi interested hai Dortmund, lekin I'm pretty sure Dortmund pay nahi kar payegi. Sancho will stick around as an option, a great option to come off the bench. Bahut expensive option to come off the bench, I know. Elanga looks like he's going to Everton, but I know Mason Greenwood looks like he might go on loan. Probably good for him in my opinion. I think it's better to get Højlund in, a left-footed striker. Or agar Onana, जो looks like it's happening any moment, हो जाता है, then I would say Manchester United, in my personal opinion, अगर Amrabat, Onana और Højlund हो जाते हैं, which looks likely, trust me, Manchester United have a team on the hands. और मैं रेट कर रहा हूँ उनका ट्रांसफर विंडो as good as the Real Madrid transfer window, अगर हो जाता है Mbappe का ट्रांसफर impactful as much as that. मैं बोल रहा हूँ Onana to Manchester United, and this is something that as a Chelsea fan I don't like it. Honest opinion, honest to God. I understand Kepa is not too bad as what people make him out to be, but he's not the topmost level elite goalkeeper. Onana has that ability. ठीक है, और Onana को letting him go to Manchester United, just like I said, we are letting go certain players like Szoboszlai to Liverpool. भाई, it's an issue. कहीं ना कहीं Chelsea hierarchy वो समझ नहीं रही है. But anyway, let's see. Bhai, again, Dybala in the house. Bhai, we have spoken a lot. I would love to be, repeating all the time, but I have spoken a lot of clubs. You can watch back the stream. We'll come back to it if time permits. We have already discussed that, my bro. Don't believe, okay, is Glazer's pet. ETH don't consider Henderson as number one. Højlund, 100 million valuation is not from Italy. I think Højlund will be done around 60 million. I genuinely believe 65 million mein ho jayega, in my opinion. Let's see, and we're talking pounds, I'm guessing, right, which is about 70 million euros. Okay, let's see बाकी लोग क्या बोल रहा. Again, we are discussing Manchester United right now as things stand, so hopefully we will have. भाई कोई तो भाई chat में कोई लोग तो हो जाओ जो talk relevant, bro. Talk with the topic. Let's follow, man. I'm discussing with you guys. You guys are my panel, man. Come on, guys. I'll be skipping all the comments which are not relevant to what we're discussing. I'll be starring some of them जो relevant है for the future, अगर time permits. लेकिन let's have that, guys. We know how we do our live streams. We have discussed club by club, so let's have that, guys. Let me not repeat the same things again. Let's like the stream. Much love to everyone coming on though. Pogba का क्या सीन है? Again, ex-United player तो थोड़ा बात कर सकते हैं. I believe that Pogba looks like Saudi, वो छुट्टी पर गया था. Looks like it. लेकिन I'll be really surprised if he goes there. I'll be really surprised. Again, ऐसा बोलता है. I don't think the transfer money is as much, right? So I don't think it makes sense for Juventus, right? Maguire should definitely go. I think कहीं ना कहीं इस पर आ जाता है. If they get Disasi as a backup, well, then they're as good as the Real Madrid transfer window if Real Madrid get an Mbappe. So it depends on that. Maguire going and Disasi coming in. बाकी तो I think it's likely anyway. Onana, Amrabat and Højlund coming in anyway. मैंने बोल दिया है. तो ऐसे मैं बोलूंगा Mighty. आप लोग भी रेट करिए. Mighty बोलता है यहाँ पर अंकित. लेकिन that means around 8 out of 10. Manchester United transfer window. Most impactful transfer Onana to Manchester United will be. But if Maguire goes and if Disasi comes in, I would say 9 out of 10. One of the best transfer windows, I would say. Højlund, मैंने बोल दिया 65 million is what I'm guessing. Okay. Dele Alli, nahi yaar, nothing about him. Felix to United, nahi, I don't think so. It's happening, bro. Again, मतलब आप बोल सकते देवेश, considering आप Mason Mount और Bruno दोनों के साथ खेल रहे हो, you need backups for them as well. Who are your backups? Maybe, लेकिन आपके backups
I think Eriksen is their backup in a plan B kind of a backup. And I think he could play there. Plus, remember last season, although it's not ideal, Sancho has played that role as an emergency cam. So it could be possible, just saying, not an ideal one. लेकिन वो एक possible है as a fourth choice backup in that position. नहीं तो I don't think you need. आपको चाहिए एक Casemiro का backup. And I think you have already you're speaking यहाँ पर हो सकता है अगर हेंडरसन जाए तो दे यू नीड अ बैकअप गोलकीपर एज वेल क्योंकि डेविड डिया और हेंडरसन दोनों जा रहे हैं तो यू नीड अ बैकअप गोलकीपर आई थिंक टॉकिंग टू अ जापानीज गोलकीपर इज व्हाट आई अंडरस्टैंड लेकिन आई थिंक दैट्स फॉर अ बैकअप अगेन दिसासी बैकअप टू क्या बोलते हैं आपका लीचा तो डिसेंट है यार हॉयलैंड again striker backup you can argue more than a number 8/number 10 you need a striker backup in my opinion 80 million का बैकअप नॉट पॉसिबल हाँ बैकअप 80 million का कौन सा बैकअप है not sure what we are referring did I say something wrong but anyway Mr. Goge what about him man again let's stick to topic guys let's stick to topic David Dia again मतलब मैं सरप्राइज हूँ इंटर मिलान क्यों नहीं जा रहा आई नो इंटर मिलान लाइक टू प्ले फ्रॉम द बैक थोड़ा बहुत इंजागी लेकिन यान सोमर इज नॉट आइडियल आंसर वहां पर भी इज गुड बट अगेन बहुत अच्छा है लेकिन डेविड डिया why isn't a top club going for him little bit surprised I think he might just go with Ronaldo man I have a feeling let's see I know but I think they are under a ban or something right if I'm not wrong but anyway let's see what happens दिल्ली वाले नहीं होने वाला भाई नहीं होने वाला डेफिनेटली नहीं होने वाला अब होता भी तो आई थिंक इज मोर लाइक अ स्क्वाड प्लेयर एट बेस्ट I hope he doesn't come as much as I definitely feel his emotions here. Absolutely big up to him. PK Hal, what's up? What's up? I think striker मैं इसलिए बोल रहा हूँ देवेश आपको एक चाहिए बैकअप स्ट्राइकर 85 million euros. So basically you're talking about 70 million pounds, Nathan. Bit too much for his age, I believe. But ठीक है. Has he proven enough? Not sure about that. Big up to Nathan here. Lekin I genuinely believe that you need another backup. मतलब you have to get rid of Anthony Martial here. Anthony Martial का क्या news है? Anyone knows? Manchester United fans? Do let me know. हाँ, मतलब again it could be a good stopgap, right? Definitely. Or will he expect to start? Not sure about that, right? Al Nassr can't register new players anymore. Yeah, I think that's the problem. Okay, fair enough. Let's see. चलो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी हो गया लेट्स मूव ऑन थोड़ा बहुत वी हैव डिस्कस्ड चेल्सी लिवरपूल मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द प्रीमियर लीग आर्सेनल का थोड़ा बात कर लेते हैं भाई आर्सेनल का लेट्स बी रियल आर्सेनल ऑन पेपर अगर आप सोशल मीडिया को सुनोगे आप अगर यहाँ पर पंडित्स को सुनोगे बट टॉकिंग अबाउट गोलकीपर्स आई फॉरगॉट क्विकली एमी मार्टिनेज टू चेल्सी थोड़ा बहुत मोमेंटम वापस से बन रहा है जस्ट सेइंग एंड टॉकिंग अबाउट आर्सेनल एक्स आर्सेनल प्लेयर भी है तो उससे याद आया मुझे लेकिन लाइकली नहीं लग रहा मुझे ठीक है कमिंग बैक टू आर्सेनल नाउ दे हैव मेड सम ह्यूज साइनिंग्स ह्यूज इन टर्म्स ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ द प्लेयर पोटेंशियल भी भाई डेक्लन राइस टू आर्सेनल लेट्स बी रियल वो हो रहा है ठीक है अभी तक फॉर्मली अनाउंस नहीं हुआ है बट लेट्स बी रियल वो हो रहा है 100 million क्रेजी मैन क्रेजी फॉर डेक्लन राइस बट हमें सब पता था 100 million पर जाएगा एट सम पॉइंट लैम्पार्ड ने इंटरव्यू दिया दैट मैं चाहता था डेक्लन राइस भाई लैम्पार्ड ने as much as I love Lampard and you guys know it ठीक है as a player इतना ऑब्वियस सा चीज बोलने का क्या जरूरत है यार कोई भी मैनेजर हो अगर चेल्सी के कनेक्शन रखता है तो भाई he would want Declan Rice ideally and the reason why Declan Rice के लिए हम नहीं गए before is because West Ham were pricing us out remember that is why we went for Enzo before ठीक है and Enzo I am definitely not regretting what a top player लेकिन Declan Rice to Arsenal अभी क्यों हो रहा है why because they have Champions League football again for all the people saying that it is हम impact बोल रहे हैं ना impact Mbappe to Madrid will have top level impact absolutely similar to Onana to Manchester United will have top impact in my personal opinion जब impact बोल रहा हूँ there are a lot of people saying that Declan Rice का impact to Arsenal is probably as big I disagree people might get shocked हाँ they will definitely be in the top 4 in my opinion because of that transfer in particular apart from Havertz or Timber 100% no two ways about it लेकिन याद रखिए they might lose Thomas Partey they have lost Granit Xhaka two people who know the club from the last 12 to 24 months proper in fact Granit Xhaka तो भाई 6-7 साल तो I would say कहीं ना कहीं it will take time I don't think it will have as much impact why because Declan Rice we have seen what he's done for West Ham in the Premier League he's done brilliantly but is he the player who would take that midfield to the next level what say in the past
if you all know exactly what I'm talking, जब माइकल एसियन और मैकेलेली आए थे चेल्सी में 2000 4 5 6 में, उसके बीच में 2003 में आया था मैकेलेली चेल्सी, 2005 में आए थे एसियन, 2004 में, और 2005 में 6 में आए थे बैलक. जो वो इम्पैक्ट था ना, विल दे टेक that level? I'm not too sure about it. I'm not too sure about that. But again, top player, he will definitely make sure of them getting to top 4. Why? Also because Declan Rice, as much as वो खेला topmost level at the international level, he is not played Champions League. Havertz, yes, he's a Mr. Champions League, Mr. Clutch, but he's not played the number 8 from a while. ठीक है, तो टाइम लगेगा. इवेंचुअली इट विल डेफिनेटली बी ह्यूज इम्पैक्ट्स, लेकिन मुझे नहीं लगता दे आर इन द कॉन्वर्सेशन व्हेन यू टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पैक्टफुल ट्रांसफर दिस ट्रांसफर विंडो, जो हो गया या होने वाला है, जो आज का टॉपिक है मेन, अलॉन्ग विद कंपेयरिंग क्लब ट्रांसफर्स. आई डोंट थिंक वो है, बट डेफिनेटली गुड है. भाई पार्टे का कंफर्म नहीं है, बट विल पार्टे बी अ बैकअप? आई रियली डाउट इट. Partey, one of the things, main things why people saying talk about Atletico Madrid, why he came to Arsenal is because of that. Yes, I understand Arsenal and Champions League. I understand उनके बहुत सारे games होंगे, they have to rotate. But remember, Jorginho भी last window में sign किया था. You cannot have them playing maybe a 4-1, 4-1 or a 4-3-3 with a single pivot with Rice, Jorginho, Partey. No, you cannot have that. आपको Partey को देना पड़ेगा. जैसे हमने बोला बारसा के लिए आपको केसी को देना पड़ेगा. You cannot have him in that team if he's not starting. He is better off क्योंकि वो अभी भी पैसा ला सकता है आपके लिए. तो वो सेम से पार्ट है. Remember, they are making a lot of signings. I would say rather Lavia could be coming in as a backup. That is more likely. इसलिए मुझे लगता है पार्टे might go, in my opinion. I'm Bayern fan. I want Arsenal a Champions League, Emirates. Kane hat-trick with Gnabry hat-trick assists. Bayern fans exactly know Gnabry and being an ex-Arsenal player as well. Declan Rice is no way. Declan Rice is worth 100 million and Frankie is 80. Okay, interesting. Aritra obviously a Barca fan in the house. Rice not press resident. By अच्छा player है, बहुत बढ़िया player है. I wanted him at Chelsea. I will not lie. He would have been the ideal signing next to Enzo Fernandez, but he would have not come in a season where we have let go Mason Mount and we don't have Champions League. As much as Arsenal जीतेगी नहीं Champions League. Sorry Arsenal fans, but that's a fact. आप अगर जीत जाओ तो भाई I'll be proven wrong. That's all. I'll put my hands up. ठीक है. तो for me, whether that impact नहीं, but आप रेटिंग क्या दोगे आर्सेनल को? They have lost Xhaka, possibly Partey, with Timber coming in as a very good competition for Ben White. काफी अच्छा competition है with Havertz and Declan Rice coming in with potential Lavia as a backup. Overall, I think it's looking mighty again. मतलब I think यहाँ पर मैं नहीं बोलूंगा it's the level of, and people will be surprised that मैं बोल रहा हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड का ट्रांसफर विंडो might end up being better than Arsenal's transfer window. I'm not a Manchester United fan, neither an Arsenal fan, I'm telling you. लेकिन that's what I believe. आप लोग भी अपना रेटिंग दीजिए. मुझे मैं रेटिंग दिया मोर देन माइटी एंड ऑलमोस्ट ऑल माइटी मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर सब हो जाता है जो ट्रांसफर न्यूज हमने लाया है, which is looking likely, along with Real Madrid. But just behind, I would say, is Barca, PSG, surprisingly. I would also say Manchester United, just behind. And Liverpool, Chelsea, even more behind, along with Milan clubs. Arsenal getting Kai, Rice renewing Saliba. Renewing Saliba वो सब काउंट नहीं कर रहे भाई. रिन्यूअल्स में जाए तो भाई रात भर बात करते रहेंगे अपन. Saka and Martinelli, well, that's very good transfer window, but I think they need a centre forward too. I think they're good, bro. Gabriel Jesus said he was injured for a long while. Messi is good, or the way Arsenal play, he'll be good. Gabriel Jesus है, Nketiah है, he's still there. Remember, people forget he's a plan B for sure. Or Havertz could play there, Trossard could play there. Remember, so they have like 4 people who will play striker position, bro. Ferran Torres, Sanjeev नहीं लग रहा मुझे. If not Arsenal, then who? उनके दिया City again. चलो भाई, let's do a City now. Messi is good to put 8 out of 10. Agreed with Messi is good. भाई City का कर देते हैं. देखिए सिटी का जरूरत नहीं थी, बट बहुत सारे आउटगोइंग्स है भाई. न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज ये आ रहा है कि बर्नार्डो सिल्वा जो बहुत इंटरेस्टेड थी बारसा और सऊदी वर रेडी टू पे ऑलमोस्ट 80 मिलियन. उसका आधा, एंड वी आर टॉकिंग यूरोज हियर, उसका आधा अभी नहीं दे रहे हैं महारेज के लिए. और सिटी माइट गेट टेम्प्टेड अलोंग विद वॉकर टू बायर्न. भाई दिस एक्चुअली माइट हैपन. So considering that, it's a big loss. But remember, Gundogan is also gone on a free to Barcelona. तो कहीं ना कहीं that treble winning side is kind of re-initialize कर रही है the way that they want to set up. लेकिन knowing Pep, I think I'm confident they'll do well.
तो इरेस्पेक्टिव साइनिंग मैं बोलता हूँ उनका रेटिंग अच्छा ही रहेगा। लेकिन कोवाचिच फ्रॉम चेल्सी भाई मात्र 25 मिलियन पाउंड्स में लिया है भाई। इट्स अ स्टील इन माय ओपिनियन, एब्सोल्युटली स्टील। तो कोवाचिच कमिंग इन, जोस्को ग्वार्डियोल लुक्स लाइक दे वांट 100 मिलियन, दैट्स लाइप्जिग, जो बाय द वे बैकअप साइन कर रही है बिचियाबू फ्रॉम पीएसजी फॉर 15 मिलियन। बिचियाबू हमने देखा था इन चैंपियंस लीग, आपको याद है लास्ट सीजन में ही हैड a couple of appearances only, लेकिन he is 6 foot 6 inches and he is just 18। तो कहीं ना कहीं दे आर वांटिंग टू रिप्लेस अ जोस्को ग्वार्डियोल विद अ बिट्शियाबू, व्हिच इज नॉट टू बैड बट इट्स स्टिल अर्ली डेज फॉर हिम। खाली 15 मिलियन में, रिमेंबर दैट। बट एट द सेम टाइम लाइप्जिग का ओपेंडा भी गया, दैट्स अ ग्रेट साइनिंग। बट हाँ, कमिंग बैक टू सिटी, ग्वार्डियोल अब 70 मिलियन हैज बीन रिजेक्टेड, डेफिनेटली नॉट हैपनिंग भाई। 90 मिलियन भी ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर लिया था उन्होंने चेल्सी द्वारा, रिमेंबर लास्ट विंडो। बट आई थिंक 90 मिलियन इस बार में हो जाएगा, आई थिंक दैट्स हैपनिंग। लेकिन पहला क्या बोला है ऑनस्टीन ने, दैट दे नीड टू गेट रिड ऑफ लपोर्ट। लपोर्ट कहाँ जाएगा यार? आई नो लपोर्ट वाज linked to an Arsenal as well. अब इंटरेस्टिंग रहेगा लपोर्ट, वेयर विल ही गो? बट आई डोंट थिंक आर्सेनल विल साइन ऑन द सेंटर बैक, क्योंकि आपका गैब्रियल है, आपके सालिबा है, बेन वाइट है, टिम्बर है, ऑल कुड प्ले सेंटर बैक। आई डोंट थिंक देयर इज नीड टू साइन सेंटर बैक विद टोमियासु एंड इमरजेंसी सेंटर बैक एज वेल। अगेन लेट्स सी। Balogun will be better than Tony. हाँ, Balogun Chelsea भी interested है, I forgot that Zerato big up bro, big up, yes, Chelsea interested है, but is Balogun a starter right now? मैं याद रखिए मैं जो बोला था, we need some experience, so maybe come January we'll have that in the form of Dybala and Tony both being there as experience in the forward, you know, 3 positions along with maybe Nkunku, just saying, or Sterling. But let's see. Gvardiol confirm नहीं हुआ। I think 70 million और 100 million, there is a 30 million difference, तो वो 15-20 मिलियन और देकर करना पड़ेगा सिटी को, और कर लेगी। लेकिन अभी प्रायोरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि उनका प्रायोरिटी है फर्स्ट टू लेट गो लपोर्ट। लपोर्ट कहाँ जाना चाहिए आप लोग सब बोलिए भाई। आई विश दैट हैपेंस, बट नहीं होने वाला। शगुन आई बी हैप्पी इफ इट हैपेंस, लेकिन लुक्स लाइक वी माइट ईदर गो विद एमी मार्टिनेज और गो विद नो वन। आई विल बी रियली सरप्राइज्ड मेसी इज गुड। देखो एक जन तो पक्का जा रहा है, मारेज और सिल्वा। अब सिल्वा का प्लस पॉइंट क्या है? एज मच एज मारेज कैन हैव मोर इंपैक्ट इन द गेम्स एट टाइम्स, स्पेशली कप गेम्स, सिल्वा टैक्टिकली बहुत ही ब्रिलियंट प्लेयर। ही कुड प्ले ऑन द लेफ्ट विंग, राइट विंग, एज वेल एज बेसिकली इन द मिडफील्ड, एंड समटाइम्स एज विंग बैक एज वेल। तो आई थिंक ही डज मच ऑफ अ रोल। प्लस द गाय हैज एक क्रेजी, मतलब एक फाइट है यार मैनचेस्टर डार्बी में, आपको दिखता है व्हाट सिल्वा इज ऑल अबाउट, यू कैन सी दैट, एंड दैट्स समथिंग दैट आई थिंक सिटी विल नॉट वांट टू लूज। हाँ, अगर महारेज के लिए बहुत ही कम मिल रहा है, लाइक 30 मिलियन विच इज रिपोर्टेड, आई थिंक दे विल नेगोशिएट इट। अगर महारेज का मिल जाता है अराउंड 45 मिलियन, दे विल गेट टेम्प्टेड बाय महारेज गोइंग। नहीं तो सिल्वा के लिए अगर मिलता है 85 मिलियन, दे माइट बी टेम्प्टेड, बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट मनी। कैन बार्सा अफोर्ड दैट? नो, सिंपल एज दैट। तो दैट्स द रियल रीजन मेरे भाई। लेकिन लेट्स सी, हाशिम ह्यूज फैन, मी एज वेल ब्रो, मी एज वेल। भाई गौरव इन द हाउस, क्या हाल है भाई? गौरव लेट ज्वाइन क्यों भाई? हमने चेल्सी का बात किया, लेकिन विल कम बैक फॉर कपल मिनट्स इन द एंड बिफोर एंडिंग फॉर श्योर। लेकिन अभी हम डिस्कस करें भाई, सब लोग हमने बहुत डिस्कस किया है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मैन सिटी का। तो मैन सिटी लुक्स लाइक लपोर्ट गोइंग, अब वो कहां जाएगा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इधर मुझे पक्का मालूम है कि भाई आने वाला है ग्वार्डियोल, ठीक है। हो सकता है दे गो विद प्री कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ग्वार्डियोल जॉइनिंग नेक्स्ट ईयर, quite possible, क्योंकि Bitshiabu who's coming to Leipzig is not ready to kind of start and fight for the title, जो hopefully Leipzig इस बार fight करे, just saying। I know they've lost Nkunku, Soboslai and co, but anyway I think they should definitely fight at least। लेकिन again Guardiola is coming, that's the bottom line। Kovacic आ गया already, ठीक है। I genuinely believe Cancelo will go, Cancelo और Laporte, लेकिन कहाँ जाएंगे? That's a big question। They might have to stick around with for a timing, let's see। Barca in talks with Cancelo, हाँ ये हो सकता है, that might happen। अगर Fresneda doesn't go there, अगर Fresneda को गारंटी नहीं मिलता that he starts there, what is the point of him going there? Because he's still very very young, that might be a plan B। हमने बारसा के बारे में बात किया था, and इसलिए मैंने बारसा का बहुत अच्छा रेट किया है विंडो, because I think there are still a lot of possibilities for Barca। Talk about Cancelo on loan, so that might be likely। लेकिन मुझे लगता है मारेज, क्योंकि कल्चरल एलिमेंट भी है, लेट्स बी रियल, मारेज का विद द सऊदी, एंड मुझे लगता है मोर देन सिल्वा गोइंग टू सऊदी और बारसा, इट मेक सेंस फॉर मारेज टू लेट हिम गो टू सऊदी।
और वॉकर टू बायन ऑल्सो मेक सेंस, क्योंकि वो खेलते हैं 3-2-4-1 विद, अगर फोर द बैक खेले तो रिको लुइस इज दर ओनली ऑप्शन, जैसे सर्जियो गोमेज आपका लेफ्ट बैक ऑप्शन है। तो दैट इज व्हाट देयर इज, उनका प्लान बी के लिए खाली एक जन इनफ है फॉर फुल बैक्स। तो आई डोंट थिंक दे नीड टू साइन एनी फुल बैक्स एज सच, एंड आई थिंक कैंसेलो और वॉकर दोनों जा सकते हैं क्वाइट लाइकली। अब रेट करेंगे तो भाई आई वुड से इट्स राइट अप देयर, आई वुड से डेफिनेटली। भाई सिटी का, I'm assuming Silva is not leaving, and I think they've already won the treble. Considering value for money, you would say that only mighty, but I think you might say almighty. अगर आ जाते हैं, and if they keep Alvarez, which is looking likely as well. Gvardiol has outstanding attributes, but many flaws. He will get exposed if not play in City setup. Colville ceiling is highest among all left centre backs. Yes, Colville, not just Liverpool, City are also interested as a backup to Gvardiol. Well put there, Rahul. टॉक अबाउट बायन, चलो भाई बायन हो जाते हैं, बहुत प्रीमियर लीग की बातें होगी। टॉटनम, भाई टॉटनम के लिए टाइम है क्या? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, विल कम टू इट, विल कम टू इट, जस्ट गिव मी अ मिनट। सागनिक मुसे भाई, क्या हाल है भाई, क्या हाल है? मुसे भाई नो प्रॉब्लम मैन, बिग अप टू यू मैन। मुसे भाई, सागनिक भाई, सब लोग जो भी यहाँ पर है, अगेन शाउट आउट टू ईच एंड एवरीवन हु जॉइंड, बट इवन इफ नॉट जॉइंड, consider it in that bell notification icon अगर आपने नहीं किया, for all the notifications, as well as like button। गौरव, बिग अप, सूरज, पुदिन, मैसीज गोट, सब मेंबर्स को नाम दे रहा हूँ, अनिमेश भाई एज वेल, सब लोग लेट्स हिट दैट लाइक बटन, अगेन शेयर करें तो ब्रिलियंट है। और आप रेटिंग दीजिए, विच इज द मोस्ट इंपैक्टफुल ट्रांसफर फॉर मैनचेस्टर सिटी फॉर अ स्टार्ट, एज वेल एज आप क्या रेटिंग दे रहे हो आउट ऑफ 10 और इन द ऑलमाइटी टर्म्स, व्हाट इज द मैनचेस्टर सिटी ट्रांसफर विंडो लुकिंग लाइक? आई वुड से डेफिनेटली, I would say almost almighty यार, अगर बर्नार्डो सिल्वा को रखते हैं as well as like I said, but I would say 100% close to 9। I think सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड में सबसे ज्यादा रेट किया हूँ। जस्ट बिलो मैंने रेट किया है बारसा, इफ आई रिमेंबर राइट, आर्सेनल, और किसको रेट किया है मैंने, ठीक है, उसके बिलो आई हैव रेटेड द मिलान क्लब्स, चेल्सी, लिवरपूल, मैंने ये रेट किया अभी तक। ठीक है, आप लोग भी अपना रेटिंग दीजिए। बायन, अब देखिए बायन का, यू कैन आर्ग्यू दैट बायन का बीबी ईयर इट्स इन द एयर, इसलिए मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं किया अभी तक। देखिए साडियो माने वाला केस अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगेन बहुत सारे स्टोरीज आ रहे हैं। आई नो न्यूकासल टॉटनहम भी करना चाहेंगे अगर टाइम परमिट, लेकिन बायन का पहले कर लेते। तो भाई पीएसजी का भी मैंने बहुत रेट किया, यस, लेकिन बायन का विद अ सेंटर बैक चेंज नाउ, आई नो किम मिन जाए, वाओ व्हाट अ साइनिंग ब्रो, लेकिन हम सब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस रखते हैं, एंड एज थिंग स्टैंड वॉकर अभी भी इमिनेंट लग रहा है। ठीक है, तो लेट्स अस्यूम वॉकर कम्स इन, किमिक रहे, कहीं नहीं जा रहा है किमिक। ठीक है, लेट्स अस्यूम दैट ग्रावनबर्ग भी रहे, क्योंकि ग्रावनबर्ग का स्टोरी आ रहा था, बट आई डोंट थिंक इज गोइंग एनीवेयर, एंड कॉनराड लाइमर आया है, डोंट फॉरगेट दैट। माने, he might genuinely go, in my personal opinion. In terms of striker, Kane. Obviously, Harry Kane is the big one. ठीक है, जैसे एम्बापे टू मैड्रिड might be the most impactful transfer मेरे लिए, along with Onana to Manchester United. I genuinely believe Harry Kane to Bayern Munich will be that. And I see that happening? I see that happening. Spurs का हम डिटेल में बात नहीं कर रहे, लेकिन Spurs, I know पोस्टेकोग्लू का स्टेटमेंट आया है, but I genuinely believe भाई हैरी केन हैज टू मूव आउट। और आप, यस आई नो 80 मिलियन यूरोज में भी मना कर रहे हो स्पर्स, जैसे हमने बोला जोस्को ग्वार्डियोल के लिए, सिटी के लिए हो जाएगा 90 मिलियन में, ये भी हो जाएगा 90 मिलियन में, आई जेन्युइनली बिलीव हो जाएगा 90 मिलियन में। केन टू बायर्न म्यूनिख, भाई अर्ली हियर वी गो, यू आर हियरिंग इट फ्रॉम मी, एंड आई थिंक भाई टूकल इज इंटरेस्टेड इन हिम फॉर अ लॉन्ग वाइल, और माने विल बी गोइंग आउट। दैट मीन्स आपको क्लैरिटी मिल जाएगी द वे टूकल प्लेज, यू हैव अ कोमन, अ गन्नाब्री, यू हैव अ साने, बहुत सारे ऑप्शन है आपके, मुसियाला, मुलर बीइंग पॉसिबिलिटीज who play there as well wide, but of course that main striker जहां पर Matthias Tel can be a backup along with Choupo-Moting and Kane. What a lineup with keeping Kimmich, Konrad Laimer, Goretzka. क्या लाइनअप लग रही है भाई बायर्न की, विद किम मिन जाए। प्रॉब्लम यहां पर है लूकस हर्नांडिस, द रीजन मैं नहीं बोल रहा हूं ऑलमाइटी, ऑलमोस्ट ऑलमाइटी होता, बट आई थिंक दे देता भाई, ऑलमाइटी दे देता एक्चुअली। अगर केन हो जाएगा डिस्पाइट लूकस हर्नांडिस गोइंग अवे, आई वुड स्टिल से ऑलमाइटी फॉर बायर्न म्यूनिख, यस इट्स दैट गुड। वॉकर कमिंग इन, नो ब्रेनर, कैंसेलो को भाई लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट होगा बायर्न म्यूनिख के स्क्वाड में, वॉकर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट साइनिंग दैट।
Again, Bundesliga, I can easily see Walker playing a couple of seasons at the topmost level, week in, week out. Mazraoui, what a backup. I know kahin na kahin unfair on him and Gravenberg that they were expecting to start game this season, but I think they should be happy. Tuchel, I know he doesn't rotate as much, लेकिन करेगा, enough करेगा. I know as much as हम बोलते हैं he doesn't rotate as much, लेकिन कुछ ना कुछ change करता है हर एक 11 हर एक मैच में. He is also known as Tinkerman tactician Tuchel. Remember, by Chelsea fans, back from the Chelsea days as well as to some extent Dortmund. भाई एक सेकंड, हरजस को बिग शॉट आउट यार, ऑलवेज सपोर्टिंग चैनल, मैनचेस्टर फैन द हाउस, बट ऑलवेज वेलकम माय ब्रो. थैंक्स मैन, वेलकम बैक टू द ऑलमाइटी फैम. अगेन भाई, जो भी लोग मेंबरशिप रिन्यू करना चाह रहे हैं, जो लोग मेंबरशिप का टैरिफ्स और एज वेल एज पर्क्स देना चाह रहे हैं, यू मोर देन वेलकम. डिस्क्रिप्शन में पहले 2 लाइन में मैंने डाला है ऑलमाइटी ब्लूज और ऑलमाइटी स्पोर्ट्स, जो दिस इज अ सेकंड चैनल बाय द वे, डू चेक दैट आउट एज वेल इन केस यू आर इंटरेस्टेड. सूरज, मैंने तो भाई 75 मिलियन बोला, आप तो 100 मिलियन बोल रहे हो. Yeah, I think क्या 90 million pounds is what I'm saying, Tangnik. So that is about 105 million euros. Yes, fair enough. Delict with players and देखिए वही question है ना. Udin, having followed Dutch football and Delict has one of my players that I wanted at Chelsea last season. आपको याद है, हमने stream भी किया था. I remember that very well. Is Delict the ideal left centre back? No, I don't see that. Delict is the ideal centre back in the back three or the ideal right centre back. Is he the ideal left centre back? No, I genuinely believe no. Yes, मैंने बोला था खुद चेल्सी के लिए जब लिंक था कि यार he could become a next John Terry, but कहीं ना कहीं मुझे लगता है that left footedness will be missed. Why? Because मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सिंगल आउट हो जाएंगे. अल्फोंसो डेविस, who doesn't want to play as left back, is your left wing back or left back again. तो वहां पर स्पेस क्रिएट हो सकता है. तो आई थिंक हाईलाइन जो रखती है बायन माइट बी एन इश्यू विद डिलिक्ट प्लेइंग देयर. आई थिंक दैट इज द ओनली रीजन मैं बोल रहा हूँ I would rate around 8.5 out of 10 and not 9 or 10 out of 10. लेकिन काफी अच्छा है, assuming that Kane goes there. I think Kane looks more likely. Yes, they're going for all the three Harshal, लेकिन Kane looks likely हो जाएगा 90 million pounds में, definitely. And yes, let's go for 200 likes, guys. Everyone, big up to the fam, man. Absolutely. भाई हमने discuss किया literally, man. We have discussed 2 top La Liga clubs in Bayern Munich, sorry, in Real Madrid and Barcelona. Then we have discussed Chelsea, Liverpool, Arsenal, Manchester United. We have discussed PSG. हम डिस्कस किए इंटर मिलान, एसी मिलान और बायर्न म्यूनिख. भाई 10 क्लब डिस्कस किए लिटरली. तो भाई कहीं भी ऐसा कंटेंट मिलेगा आपको. 10 clubs you have literally discussed ins and outs, potential ins and outs, rating the transfers, comparing everyone. भाई सबसे इंपैक्टफुल ट्रांसफर्स आप बोलिए जो हुआ है या होने वाला है इस ट्रांसफर विंडो में इन द चैट. मैंने रेट किया 3 ट्रांसफर्स. यस, आई हैव रेटेड कहीं ना कहीं Real Madrid, Manchester City and Bayern Munich having the topmost transfer windows in the end. मैं बोल रहा हूँ, yes, I'm saying that. Maybe even Manchester United मैं बोलूँगा. Manchester clubs, Bayern Munich and Real Madrid topmost transfers. Then behind that, I would say Barcelona, along with I had rated whom here? PSG, surprisingly. और उसके नीचे I rated Chelsea, Liverpool and the Milan clubs. ये है मेरा रेटिंग. तो 4 clubs मैंने रेट किया ऑलमाइटी, Real Madrid, Manchester United, Manchester City और Bayern Munich. 2 clubs mighty in basically Barcelona and PSG, and below that are the Milan clubs and Chelsea, Liverpool. But impactful, मैंने सबसे impactful transfers रेट किया है जो होने भी वाला उसके हिसाब से. In my personal opinion, Mbappe to Real Madrid definitely right up there, Kane to Bayern Munich definitely right up there, and Onana to Manchester United. Maybe future के लिए आप देखो तो maybe Vitor Roque to Barca, or of course Josko Gvardiol to Man City might be in the conversation for sure. But Andre Santos to Chelsea, don't forget that. I think that will be huge as well in my opinion. अरे कोई नहीं यार, मारा बिग अप मैंने ऑलवेज मच लव. भाई शाउट आउट है भाई, स्पेशल शाउट आउट दिया है मैंने कुछ मेंबर्स को, स्पेशली यू गाइस नो, कंप्लीटिंग अ ईयर एज वेल. लेकिन काइसेडो देखते अगेन, काइसेडो और मे बी इवन मैकालिस्टर, टू प्रूवन प्रीमियर लीग प्लेयर्स might be right up there. Let's see. But let's see. Again, keeping Colville will be key. Very, very good point. भाई स्पर्स और न्यूकासल का हमने डिस्कस करने का टाइम नहीं मिला, बट अगेन हमने आउटगोइंग थोड़ा डिस्कस किया. टोनाली का हमने डिस्कस किया था. इट कुड बी द इम्पैक्ट वन एज वेल. लेट्स सी. बट देखते हैं किएगा तो न्यूकासल, इफ दैट हैपेंस, क्रेजी मैन. लेट्स सी भाई. लेकिन मच लव फॉर एवरीवन जॉइनिंग इन. हैव वी गॉटन टू 200 लाइक्स? भाई साग्निक से लेट्स गो टू 200 लाइक्स. गाइस कितने लाइक्स हुए? Mods, members, do help me out in the chat. Subs, big up to everyone. Let's get to 200 likes, or let's get closer to 10k. Anyone who watches the channels and is not subscribing, give us feedback. Just a press of a button.
every time you have subscribed to any channel, also recommended कि आप like button भी दबा दीजिए stream को, और most importantly hit that bell icon, क्योंकि you will get to know whenever we are live or we put up a video. Yes, we are coming up with, again, with shorter videos as always, not just here on Almighty Blues but also on Almighty Sports. और अगेन डू चेक आउट दोनों ही चैनल्स के लिंक्स बिलो इन द डिस्क्रिप्शन ऑलवेज, along with the membership links, अगर आपको देखना है at the price of almost nothing. Come on, let's get there. Wow, let's see. मानव, I think otherwise यहाँ पर jury's out यहाँ पर, लेकिन again who knows what could be. अच्छा, राफेल गुरेरो, I missed it. Again, बायर्न को मैंने already almighty रेड कर दिया. But he's not a starter. I think Alphonso Davies is a starter. कहीं ना कहीं इसलिए मैंने बोला है. But कोई नहीं. Big up everyone, bro. See you soon. कल हम लाइव होंगे ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स एंड मे बी यहाँ भी, एज वेल एज यूनाइटेड रोड. शाउट आउट है आपको सबको. मच लव. ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी.